Now am I audible? Hello. Yes, now we are. I think no sound is coming from your side. Now it might be working right now. Hey Rohit, how are you? Where are you from and what do you do? Can you please introduce? Let me first introduce myself. My name is Harshit. I hope you're doing well. And I am a final year BTech undergrad. मतलब मैं फाइनल ईयर में हूँ preparing for placements और I started this channel to document my journey and share, learn in public, share my progress in problem solving, and also build habit of solving coding problems regularly and be consistent and disciplined. That is why I took a challenge to solve 455 problems of Striver's A to Z sheet in just 45 days. But I could solve only 240 problems in 45 days. But today's focus is not on that series, but we are preparing for Infosys today. And I have no idea what to prepare for it. And we will just revise some concepts. And for your information, I have not solved binary trees, binary search trees, and graph and DP. These four concepts which Infosys ask very frequently. So either we can like learn the basic concepts or the working of these four topics and solve some basic problems on these topics in the next 10 days because I have my exams also going on at the same time. There are 4 to 5 roles. First one is DSE, second one is SP, SP level 1, SP level 2, and power programmer, something like that. SP1, SP2, and power programmer, ऐसा कुछ. Strange Vitarius is saying, please start from very beginning level. Bro, I am also intermediate, but I'm focusing more on the topics which I don't know. मतलब आता तो सब कुछ तो वैसे भी नहीं आता है. लाइक ट्री ग्राफ और डायनामिक प्रोग्रामिंग, ये तीन टॉपिक्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछता है इन्फोसिस किस मीडियम क्वेश्चंस पे, मीडियम और हार्ड क्वेश्चंस में. एंड वही मेरा बहुत वीक है. बट वी विल बी एबल टू सॉल्व इजी प्रॉब्लम्स. लेट्स सी व्हाट वी कैन डू. Travel enthusiast is asking how do you write in Skelly-Drop? Bro, using my touchpad of my laptop. This is what I use. This finger and the touchpad. I am also thinking to buy what we call it. What do we call that pen जिससे टाइप लिखते हैं some YouTubers on their digital screens. So that. Okay, Infosys stylus, yes. PYQs, coding problems. Although I wanted to be prepared by like preparing a structured roadmap on how what topics we will be studying in the next 10 days, but I was preparing for my some exams also, so I couldn't do that. Mm. What should we do? We have three options. Either we'll start learning trees and graph, or we can start by revising. My sound is low. Maybe I'm speaking slowly. Is it good now? Hey Vishnu Gupta. Acha, you were saying the sound is low. My exam for Infosys GSE is on 5th of December. Okay. Is there any website which has good resources for company specific questions?
interview, BSc role, and for all of you who are new to my channel, please check out my 45 days of code challenge series, in which I took a challenge to solve Strava's A to Z sheet, and I have solved around 240 problems in just 45 days. It's a great achievement for me, for someone who was not even coding. Solving a single problem has solved 240 problems in just 45 days, around 6 problems a day. Yeah, no, not all of the students. Even I was not expecting that I am shortlisted. That is why I did not check out my email. And I found on the day before exam that I was shortlisted for TCS NQT. Initially, the college TNP department shared a list of students, around 2000 students who were eligible for the TCS NQT. But on the same day, they shared another list in which only 1200 students were there. And my name was not there in the second list. So I thought, okay, I am not eligible for TCS NQT. But I realized that on the last day, I realized that I was shortlisted and I also got admit card on my mail. So there are four types of questions: algorithm based, TSA based, string manipulation, mathematical problems. I watched a video of Campus Monk in which he was saying that all the four questions will be difficult. I have that PDF, TCS Code Vita, Infosys, means they shortlisted on what basis? So basically, in my college, like, it is a group of college. There are 4 to 5 colleges, so the number of students is very high. So what they do, they allow the main college students, all of the students from the main campus, and remaining 15% are from the other pool of colleges, like 2 3 colleges. So I come from that pool, which is not the main campus. So there were very slight chances of me getting shortlisted for that. Very few people from my college were shortlisted for that TCS campus. And it is basically because the main campus का fees ज़्यादा है. They charge higher for this only. यार, I could not find that PDF. Let us start by revising these mathematical problems quickly. In 1 hour, we will be revising these problems that I had solved in the beginning of my 45 days of code series. So let's revise those problems only first. Can you see this? Yes, you can see. Let's lecture number 4, reverse the number. ये तो easy problems हैं. These are really. I have streamed live एवरी सिंगल डे, मतलब जितने भी दिन मैंने पढ़ाई की है उससे रिलेटेड आई हैव शेयर्ड माय लाइव स्ट्रीम, और बस उसी टाइम मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए, और उसके अलावा मतलब कई डिफिकल्ट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स जब होते थे तो आई यूज टू लाइक स्टडी अबाउट दैट कॉन्सेप्ट इन द मॉर्निंग और डे टाइम व्हेनेवर आई यूज टू गेट सम टाइम टू स्टडी. तो इट इज लाइक दैट, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग आई हैव डन ओनली इन ड्यूरिंग द लाइव स्ट्रीम. सो जितने भी घंटे का लाइव स्ट्रीम है बस उतने ही घंटे पढ़ाई की है मैंने. बट कुछ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स वर देयर जिनके लिए मैं थोड़ा और पढ़ता था स्ट्रीम के बाद और पहले भी. स्ट्रेंज
Years is saying, bro, I got 6 CGPA in first year. You can still improve, bro. It's okay to score 6 CGPA in first year, but make sure that you stay above 7 CGPA throughout your second and third year. बिल्कुल नहीं बैठने देंगे bro. And one more thing you have to keep in mind that you have good scores in your 10th and 12th also. If you have 9 CGPA in your college, throughout your college, but your 10th and 12th has below 60-50%, then you will not be eligible for any company, because most of the company this year are applying 60% throughout. Throughout means in your 10th, in your 12th, in your college and diploma, whatever you have done. In your academics, you must have scored 60 and above. These are if else data type, input output. Day one. Day one was all about basic stuff, date and pattern. Day two got day 35. Lecture 3 is empty. Count digit. Okay. So thank you so much, travel enthusiast. And I got my first offer, if you don't know, in Capgemini. I've shared that experience on my live as well. So if you are interested, please do check out that stream as well. Link is in the description and on my channel as well. You can find it out there. Hash array. Uh, we have 25 minutes in which we will be revising array, strings, and basic algorithms. Sorting, searching, and recursion ka basics. Okay, after that we will start learning trees and graph. Largest element, 5 created so many files. अच्छा ठीक है. Remove duplicates. Okay, we can solve problems on GFG to practice as well. Hmm. Are you guys also preparing for Infosys? You can also start solving problems together on your computer screens. Okay, इसमें tags भी होते हैं, तो I hope we can find Infosys के tags. Bro, I want to solve at least one question. Please help which topic I want to cover. I am new to trees and graph. Even I am also new to trees and graph. And I was not even targeting trees and graph, but I asked one of my senior who is working in a company and is also really good at DSA. He gave me an advice that it is not that difficult trees and graph जो Infosys पूछती है. So I can prepare in the remaining time. I can also learn trees and graph and prepare for it as well. There are slight chances क्योंकि I should not leave any topic, क्योंकि ट्रीज और ग्राफ से अगर कोई इजी क्वेश्चन भी आया तो मैं नहीं कर पाऊंगा अगर मुझे ट्रीज और ग्राफ के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है. तो आई विल ट्राई टू लर्न अबाउट ट्रीज एंड ग्राफ इन द नेक्स्ट 4 to 5 days so that I will be able to solve the easy problem from these topics, right? So you can stay with us and see our progress, how we are learning. Oh, Infosys में ये क्वेश्चन आया हुआ है, लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे, एंड आई हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड इट. Binary search. So do you guys know how to do binary search?
As this is the first question tagged by Infosys, इस पे solved क्यों लिखा नहीं आ रहा? Let's solve this problem binary search. एंड मैंने काफ़ी टाइम से इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, तो लेट्स सी इफ आई रिमेंबर द सॉल्यूशन और नॉट. रिमेंबर द सॉल्यूशन नहीं, रिमेंबर द अप्रोच. Given a sorted array ARR and an integer k, find the position zero-based indexing at which k is present in the array using binary search. If k doesn't exist in array, return -1. So, okay, we will have two pointers. Int low is equals to 0, int high is equals to ARR dot length -1. Okay, सही है. And while low pointer is less than high pointer, what we will do, we will check if, okay, we will have a mid pointer as well. How much money should I spend on mic and camera to the quality like you? I also want to make these YouTube videos. That's why I'm asking. Bro, to be honest, I have spent minimum amount. Like, let me tell you, like, should I tell you? The lights behind me are stolen from my house. जो दिवाली पे जो सर्किट लगाते हैं ना तुम लोग घर के आगे, वही सर्किट है ये. तो एक ऑरेंज है, एक पर्पल है. वो पीछे वॉल के पीछे रख दिया है मैंने चालू करके, तो वो अच्छा इफेक्ट दे रही है. और उसके अलावा जो मेरे पास अभी ये जो रिंग लाइट के जैसा रिंग लाइट के जैसा जो इफेक्ट दे रहा होगा ना, वो सिंपली एक एलईडी बल्ब है. एलईडी बल्ब रैप्ड इन अ बॉक्स, और उसके आगे ना एक वाइट पेपर लगा हुआ है. तो इट इज गिविंग अ सॉफ्ट लाइट इफेक्ट. तो एक जुगाड़ तो वो है. और उसके अलावा ये जो लाइक फेस पे थोड़ा ऑरेंज टिंट आ रहा है ना, वो दिस वन इज ऑल्सो अ सर्किट जो दिवाली पे लगाते हैं. तो वो सेम है, वो मैंने वॉल पे पेस्ट कर दिया है उसको टेप की हेल्प से. तो उसकी वजह से थोड़ा ये ऑरेंज टिंट आ रहा है. मुझे लाइक वो इनिशियल वाली जो वीडियोस थी वो थोड़ी अच्छी नहीं लगती थी, तो मैंने थोड़ा बहुत जुगाड़ किया. और मेरे मुझे लाइक इन्वेस्ट नहीं करना था इतना कुछ. दैट इज वाई. और डोंट थिंक ऑफ, मतलब परफेक्शन के पीछे मत भागो यार. पहले पहले तुम फर्स्ट वीडियो में हर चीज परफेक्ट नहीं कर सकते, राइट? सो जस्ट डू इट. जैसा भी होता है अभी स्टार्टिंग में, जस्ट डू इट वट एवर यू आर ट्राइंग टू डू. यस आई एम. दैट इज हाउ आई स्टार्टेड. मतलब मैं भी ऐसे परफेक्शन के पीछे भागता था. मैं सोचता था जब सही टाइम आएगा, व्हेन आई विल स्टार्ट, मैं लिटरली आई विल मेक सम वीडियोस रिगार्डिंग दीज थिंग्स ऑल्सो. कि मैं कैसे फर्स्ट ईयर से सोच रहा था कि मैं कुछ ऐसा करूंगा, मैं अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट करूंगा, मैं इतना हार्ड वर्क करना चाहता हूँ, मैं उसे मोनेटाइज भी करना चाहता हूँ एज वेल. तो मैं नहीं कर पाया, क्योंकि यार परफेक्ट कैमरा होना चाहिए, परफेक्ट लाइटिंग होनी चाहिए, परफेक्ट स्टूडियो होना चाहिए. स्टार्टिंग के वीडियोस में देखना, जो ये सेम जो रूम है ना, वही इतना कबाड़ लगता था. बट इट इज लुकिंग गुड नाउ. सो you just need the will to start. Okay. Okay, int low is equals to 0, high is array dot length -1, and we have mid pointer that is equals to low plus high minus low by 2. Is it right? As much as I remember, mid pointer low plus high minus low by 2. ठीक है, to avoid. Okay, you're most welcome, travel enthusiast. By the way, what is your name? It's too long to pronunciate that. Travel enthusiast. Traveler. If ARR of mid is equals to k, then we will return mid. Okay. Else, if mid is greater than, okay, Ayush, all the best for your like channel, YouTube journey. जब भी start करो, live stream में आके बताना. I will check it out.
And if you need any help regarding how to like curate your thumbnails and titles, you can DM me in my Discord server there I can help out. Okay. If mid is greater than K, then we will update. Bro, I'm in final year. Vishnu Gupta is asking. Sorry. Hey Vishnu Gupta, how are you and what do you do? In which year you are? Are you also preparing for Infosys? Mm, Traveler, you can join our Discord server. There, my username is Hercules, and pin me there. I will help you out in setting up your first channel. Okay, if you are really interested in doing so. Okay, that's great. Have you got any offer or are waiting for your first offer, bro? Not waiting, preparing for your first offer. So we will, if mid is greater than K, then we will update high by mid minus 1. Okay. Else if okay, mid is less than K, that means we will iterate over after mid. So low will be equals to mid plus 1. This is how it should work. Okay, welcome Ayush to our Codecules community. And anyone else of you, if you want to start your YouTube channel or need any help on starting out, you can join our Discord server there. Okay, you are also preparing for Infosys. Let's work together, buddy. And how many problems have you solved already? What is your profile right now? Like, are you also preparing lately, starting to prepare lately like me, or you are someone experienced, solved hundreds of DSA problems on lead code, GFG? Low is equals to mid minus 1, mid plus 1. Okay. While low is less than high. Less than equals to high. And we will return minus 1 if it is not found. This is it. अभी अगर मैंने कोई बहुत बेसिक सी गड़बड़ की होगी ना तो इट्स रियली शेमफुल. रन टाइम एरर आ रहा है बिकॉज वाइल लूप में कुछ गड़बड़ किया है. Okay, so you have already worked on your DSA in your second year. That's great. Then you might have solved trees, graph, and dynamic programming questions also, because these are the topics which Infosys asks most frequently. Oops. एंड आई एम नॉट अ टीचर बडी, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट. और मैं बहुत गलतियां करने वाला हूँ तो इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ. What we were checking, if mid is equals to k, we will return mid, else if we need to update high. So if mid
is less than k. What does that mean? और k, ओके, इसको k करना पड़ेगा, स्वैप हो गया। तो वही सिंपल सा लॉजिक है उसका। उसके बाद भी रन टाइम एरर वाई। दिस इज वाई आई वॉज चेकिंग आउट कि मुझे कुछ याद है भी या नहीं। आई नो बेसिक्स टिल रिकर्जन। इट इज टेकिंग मोर टाइम देन एक्सपेक्टेड। सेम ही लॉजिक था ना, हाई मिड हाई प्लस लो बाय टू, while low is less than high if return mid, else if। ओ ओ ओ, इतनी बड़ी गलती कर रहा था यार, जिनको पता होगा वो हंस के चले गए होंगे। if ARR of mid is less than k, और ठीक है, let me also tell you, for using binary search we need to check if the array is sorted or not. So given sorted array, it is sorted, and then we will check the elements, not the mid. So ARR of mid is less than k, so then we will update low with mid plus 1. Okay, else we will do I is equals to mid minus 1. Now it will work, and we will return minus 1 if it doesn't work. Still runtime error, while low is less than high error. Oops, मैंने Can anyone tell me what wrong I am doing here? इतना बेसिक क्वेश्चन वो भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ। Largest element. What we are doing, we are creating a low pointer, high pointer, mid pointer is high plus low by 2, और इसको हम स्टैक ओवरफ्लो से बचाने के लिए इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मिड इज इक्वल्स टू लो प्लस हाई, हाई माइनस लो बाय 2, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। दिस इज समथिंग आई नो ऑलरेडी। एंड इन वाइल लूप, while low is less than high, we will do this if ARR of mid is equals to k.
ओ ओ ओ ये जो मिड है वो while लूप के अंदर आएगा। रियली सॉरी, आपके हेडमास्टर जी को ही कुछ नहीं आता। कितना सिंपल एरर था एंड मैं डिकोड ही नहीं कर पा रहा था। लेट्स सबमिट इट। अच्छा, सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वन बाय वन। कितने, बस इतने ही क्वेश्चंस हैं इन्फोसिस के टैग के साथ? देयर आर ओनली 8 प्रॉब्लम्स। पहला ही आंसर गलत हो गया। प्रोबेबली योर कोड डज नॉट वर्क करेक्टली फॉर मल्टीपल टेस्ट केसेस, or maybe it is because of this only. So we will update it. Low plus high minus low by 2, and low is less than equals to high. This time it should work correctly. Oh wow. अभी भी 10 टेस्ट केसेस पास हुए। अब तो मैंने कुछ गड़बड़ भी नहीं किया। सॉल्यूशन तो सही है, फिर क्यों गड़बड़ हो रही है? Avoids overflow for huge arrays in day-to-day Java arrays don't hit. Okay, condition flow less than high ensures very possible index is checked. Arrays must be sorted. Binary search is merciless if the input isn't sorted. But what's wrong in this? Okay, we need to check for duplicates also.
The core and moving is correct for standard binary search and sorted array with distinct values. Okay, so if the values are duplicates, okay, answer is equals to mid and high is equals to mid minus 1, keep left. Okay, फर्स्ट ऑकरेंस लास्ट ऑकरेंस के बारे में इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है कि if we want to return the first occurrence or last occurrence, your code's output is 8, its correct output is 5. Why? So it is giving the first occurrence, right? Okay, we need to return the smallest index if there are multiple occurrences of the same. So how do we do that? We will answer instead of returning. We will keep moving left, right? So answer will be equals to era of mid, sorry, mid and high will be equals to mid minus 1 and we will return minus 1, not as 1 but answer. It is so bad. Upper speed execution. I wanted to have solved and revived all the problems, basic problems quickly. अच्छा ये 8 problems solve करते हैं. Let's see, these problems I have already solved. We need to find first and Fibonacci numbers. We have a question given an number and return an array containing the first and Fibonacci numbers. And Fibonacci numbers. Okay, we can do that using recursion. And we can use normalization as well. A Fibonacci number is sum of the previous two.
First two number of the series are 0 and 1. If n is equals to 0, return 0. One, two, three. We need to return an array containing all the numbers. First, we will create an array new int of size n or n plus 1. 5 will have 5 active. It will be of size n. And instead of returning, we will update our answer array equals to
0. What else I need to do? That's not okay. Keep it simple and let's create an array list. Give me a help on that one. So you can find Fibonacci. Find Fibonacci of n, and here we will use this. How do we convert an array list into an array? Find Fibonacci of I will be inserted in the array list.
We thought the same because comes in house fertilizer so and minus less than equals to zero, we will return zero. Thanks, buddy. दिमाग ही नहीं चल रहा है ऐसे करूंगा मैं इन्फोसिस क्रैक विनय विश्वकर्मा थैंक यू सो मच नो नेगेटिव टॉक्स पहले बाइनरी सर्च नहीं हुआ अब ऐसे तो इतना की नंबर्स में इतना प्रॉब्लम
Hmm. Little of it as a family of problems that all orbit the same recurrence f n is equals to fn minus 1 plus fn minus 2. Okay, this is a wasteful version. You simply follow the recurrence directly. Why it exists, good for intuition building and tracing trees of choices is more complex problem. Exponential time of 2 to the power n, big of 2 to the power n, huge recomputation, stack overflow for large n. Teaching recursion, understanding branching choices. Okay, recursion plus memorization, top-down DP. Now we keep our diary of our answers. You still write the recursive logic, but store results in an array or map. Time drops to big of n, space drops to big of n. Feels natural, resembles the math recurrence, fast enough for most interview problems. Okay, useful for Fibonacci variation with extra parameters. Problems involving states when the recurrence tree is complicated and memorization makes it tedious. Two variables, matrix exponentiation, logarithm time, fast doubling method, Bayonet's formula. Okay, so it was not that easy also, but it might difficult भी नहीं था. I should have known the approach. Okay, recursion with memorization, C sharp. It's not already. Really sorry SG भाई. बता देना चाहिए मुझे. You get marks for only the first attempt. ठीक है, at least एक question तो solve हुआ कुछ से in my first attempt of vision. And what is up, Swarit? What are you doing? How was your Mela? Children's Day कैसा रहा? Children's Day.
Given an array ARR of integer where each element ARRI represents the number of pages. And Sorit, thumbnail कैसा लग रहा है? Please let me know. You also have an integer k representing the number of students. I hope you have an integer k representing the number of students. The task is to allocate books to each student such that each student receives at least one book. Each student is assigned a contiguous sequence of book. No book is assigned to more than one student. The objective is to minimize the maximum number of pages. Minimize the maximum number of pages assigned to any student. In other words, out of all possible allocation, find the arrangement where the student who receives the most pages still has the smallest possible maximum. Each element AI represents the number of pages in the ith book. So there are four books. First book has 12 pages, 34, 67, and 90. And you also have an integer k representing the number of students. Manik Naik is asking how you got an offer. Are you asking, seeing that I could not solve a question? That is why you are asking, or you're just generally asking that how you got an offer? What do you mean by that? Please elaborate on that. Because I was able to solve the question asked in the interview, and it was a really easy question to check if a given word is a palindrome or not. This was a question asked by me. Bro, I have not received offer from Infosys, buddy. If I have written somewhere, I just mean that I have my first offer in my final year. So that offer is from Capgemini, not from Infosys. मैंने ऐसा लिखा हुआ है क्या डिस्क्रिप्शन में कि I got offer from Infosys? Let me check. Hmm, It's a documentation of my personal journey as I prepare for Infosys. Share my struggle. Offer letter chase continues. It is not written like that. Who said कि मुझे Infosys से offer मिला है? It is not like that. I have an offer from Capgemini, but not Infosys. Okay. Bro, I got the base package, although I was expecting the better one. It's just 4.25 LPA. Dreamy B, I've answered your question, right? It's the base package. Let's understand. We need to allocate books to each student such that each student receives at least one book. Each student is assigned a contiguous sequence of books. No book is assigned to more than one student. So if there are two students,
and we need to minimize the maximum number of pages. Minimize the maximum number of pages and find the arrangement where the student who receives the most number of pages still has the smallest possible maximum. Okay, but what we need to return? What is the output? Output is 113. The third combination has the minimum pages assigned to a student, which is 113. So by the I have one question, that what kind of questions we should practice for Infosys. That is what I'm trying to learn as well. Like I have figured out from some reviews on YouTube and from of my seniors that most of the question, like there are three coding questions, there will be three coding questions in our test, in which the first one will be based on array strings and mathematics. So these are also not gonna be easy. सो जो पहला क्वेश्चन होगा इजी वाला, वो भी थोड़ा डिफिकल्ट होगा बट विल बी फ्रॉम द इजी कॉन्सेप्ट्स, और वो ऐसा कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं होगा. इट विल बी अ न्यू क्वेश्चन, यू हैव टू फिगर आउट द लॉजिक बाय योरसेल्फ. तो जो पहला क्वेश्चन होगा इट विल बी फ्रॉम द टॉपिक्स एरे स्ट्रिंग्स एंड मैथमेटिक्स. ओके, तो पहला क्वेश्चन उससे होगा. सेकंड क्वेश्चन विल बी मीडियम एंड इट विल बी फ्रॉम greedy approach and dynamic programming, something like that. और जो थर्ड क्वेश्चन होगा इट विल बी कॉम्प्लेक्स एंड हार्ड, इट विल बी लाइक वेरी हार्ड, बहुत हार्ड होगा, जिस जो कि बेस्ड होगा ट्री ग्राफ और डायनेमिक प्रोग्रामिंग पर. इतना कॉन्टेक्स्ट मुझे समझ आया है अभी तक जितना भी मैंने रिव्यूज देखे हैं. यस, जो हार्ड वाला क्वेश्चन होगा वो 2000 से ऊपर रेटिंग का होगा. तो वो मुझे लगता नहीं है आई विल बी एबल टू सॉल्व दैट इन 10 days की प्रिपरेशन में. मतलब 10 दिन की प्रिपरेशन में हार्ड क्वेश्चन तो इम्पॉसिबल है सॉल्व करना. बट आई एम ट्राइंग टू मैक्सिमाइज द चांसेस ऑफ सॉल्विंग द सेकंड क्वेश्चन, बट मुझे लग रहा है वो भी मुश्किल है अभी. हाउ यू अप्लाई फॉर इन्फोसिस? ब्रो, इट इज कमिंग ऑन कैंपस in my college, so this is the only way to appear. This is not the only way, it is also hiring off campus, but you have to figure out where to apply off campus. भाईजान क्या हाल है? एकदम अच्छा हूँ ध्रुव भाई, तुम कैसे हो? What about you? So according to you, how many questions we need to solve? It is very simple. मैंने कहीं तो देखा, like someone was reviewing it and they said we have to attempt all the three, at least three questions. He was saying that there will be four questions, four coding questions, four coding problems, and for DSE role, we need to attempt three problems, out of which at least at least one problem must be solved correctly. That means all the test cases passed. Or it can be from any section. But if we are targeting for, which is the second rule? सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर SP लेवल 1, ऐसा कुछ रोल है उसका. उसमें भी फर्स्ट थिंग इज अटेम्प्ट द थ्री प्रॉब्लम्स
and at least one problem must be correct and from the medium, hard and complex one. मतलब जो चार प्रॉब्लम according to him were, first one is easy, second one is medium, third one is hard and उसके आगे एक complex problem भी होगा. There will be four problems, out of which if you are able to solve only the easy one, you might be eligible for 6.25 or 75, 6.75 LPA. And if you are able to solve the one from easy, medium, hard, or complex, then you will be eligible for SP role, that will be 10.25 or something, 10 LPA. और उसके बाद if you are able to like complex नहीं, medium or hard only, and then if you are able to solve other, उसके आगे तो I am not targeting even. I'm just hoping that I be able to solve easy and medium one. That is what we should target for first, step by step. Hmm. And I'm not getting के ये वाला question कैसे solve करूँ right now. It is also a PYQ from Infosys. Accuracy is 35% and medium. We need to minimize the maximum number of pages provided to each student. Manik Nayak, I have binary search on answers is very important, as well as this problem is based on that. Yes, I know I've solved this problem earlier, but I lost the concept and approach. I was solving Striver's A to Z sheet in which I had solved this problem and the binary search on answers as well, but मुझे अब कुछ याद नहीं आ रहा है. This is why I'm revising. मैं भी कुछ क्वेश्चंस ढूंढ के दूंगा या फिर उठा के सीधा इंटरव्यू स्क्रिप्ट दे दूंगा. इट इज नॉट एन इंटरव्यू, स्वरित. इट इज अ कोडिंग टेस्ट फर्स्ट. इंटरव्यू उसके बाद होगा. उसके लिए पहले आई नीड टू बी एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू. ओके. So how I used to do that, we have a possible range of answers in which we will do that search. So minimize the maximum number of pages assigned to any student. So if this is the input test case, what will be the possible answers? The pairs of two. There are two students, so the possible combinations will include Maniki Singh. They think I distribute one pages to one person, so we need sum of pages of students, but have only two students. ध्रुव गौर is saying भाई बहुत दिनों बाद आपकी लाइव ज्वाइन की, enjoying our journey towards success. We have a long way to go, ध्रुव भाई. Let's see what is there on the next page. अभी तो ये स्टूडेंट्स को पेज डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा.
The objective is to minimize the maximum number of pages assigned to any student, in other words. So the minimum number of pages that one student can get is 12, and the maximum number of pages that a student can get is the sum of the maximum, मतलब sum of all the numbers except the minimum. So the range will be from 113 to 191, and we will return 113. Minimum pages assigned to a student. अच्छा ठीक है. So what we can do, first we need to find the maximum possible number of pages that one student can get. So this is the sum of the books which have maximum number of pages. You know this, finally search on answer, then think about ranges, then it will be easy. Yes, I'm trying to think about ranges. One thing we need to keep in mind, we need to give one book to every student. So one thing is clear, if the number of students is greater than the number of books, it will be impossible to find pages arr dot length. तो फिर मैं बेस्ट कोडिंग क्वेश्चंस S1 के हिसाब से ढूंढ के दूंगा. अभी मैं खाना खा के आया. ओके स्वरित. तुम्हें कॉलेज वाले नोट्स भेजते हैं हर्षित? हर्षित सिंह भाई, कल आईओटी का सेमेस्टर एग्जाम है और कुछ नहीं पढ़ पाया क्योंकि कॉलेज वालों ने नोट्स ही कल भेजे, और ऊपर से प्रैक्टिकल प्लस प्रोजेक्ट प्लस सेमिनार रिपोर्ट इंटर्नशिप. अब बताओ क्या करूं, कैसे कल एग्जाम दूं? तो मतलब जब एग्जाम शेड्यूल आया होगा तब तुम्हें पता होगा कि तुम्हारा एग्जाम है 24th को. मेरा अभी 25th को है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का. तो आई हैव प्रिपेयर्ड माई नोट्स माई सेल्फ, एंड आई एम learning from it as well. Or I have also submitted my internship report, major project report. सबमिट तो नहीं किया है बट इंटर्नशिप रिपोर्ट सबमिट कर दिया है. If the number of students is greater than number of books, you are in Jaipur police internship. What do you mean by police internship? पुलिस भी नहीं बोल पा रहा हूँ क्या ठीक से. If k is greater than n, we will return what we will return. Agar it is not possible, if it is not possible to allocate books all the students, return -1. You are an intern under the guidance of Jaipur Police. Okay, and you are doing engineering, IoT. Oh, that's great. So ask them for, but report तो तुम्हें खुद बनानी पड़ेगी ना. Whatever you are doing in that internship, you have to j- like curate that report according the, मतलब तुम्हारा कोई मेंटर होगा ना कॉलेज का. ही विल प्रोवाइड यू द फॉर्मेट कि तुम्हें कैसे रिपोर्ट बनानी है, एंड यू विल क्रिएट दैट रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू योर डिपार्टमेंट.
Draw. And we have an array of books and number of students. I'm also at this case now. What to do next? How even binary search work here? We need to think of the possible ranges. They are asking for the minimum. We need to minimize the maximum number of pages one student gets. तो इसका मतलब ये है कि we have these books, so the answer will not be from this array but actually the sum of the books. What it basically means कि there are two number of students and we need to distribute these books to two students in such a way that a student gets the minimum maximum, like minimum number of pages. Let's say we give one student this last book and the other student the first three books. So the sum they will number of pages they will get will be equals to 113 and 90. Okay, this is the combination. Okay, otherwise if we give two books, the sum will be not two, but if we give the first student the first book, its number of pages will be 12 and the remaining will be uh, 71 and 30, 101, 191, right? Yes. And the third combination will be, इसको ऐसा करते हैं, 191 यहाँ होगा, यहाँ it will be 12, इसको नीचे करते हैं. इसके अलावा और क्या कॉम्बिनेशन होगा? If we give 67 and 90, these two book to one student, these two books to the other student, then the maximum will be 157, right? Yes, 157, and the other student will have 46, right? So our answer ranges from 133 to 191. So we have to find this thing out. We need to find the minimum maximum that a student gets. So we have to minimize the maximum number of pages one student gets. Okay. So what we will do, we will create an imaginary range of answers starting from 133. And how do we find out this? Mm, First, we will find the maximum number of pages one single book has. So that will be 90. Okay. So it cannot be less than the largest book. ओके, सो एक बुक तो देनी होगी, उससे छोटा तो कोई हो नहीं सकता. द मैक्सिमम.
Okay, let's see. We will first store the sum of all the numbers, the total number of pages that we have that we need to distribute. Int max book with maximum pages, single max in. Okay, initially max in will be 0, and the sum of all the pages, all pages of all the books will be 0 as well. And for int p in array, p is the number of pages a particular book has. We need to find the book which has the maximum page, so we will update the max in with math.max of max in comma arr, sorry, arr nahi, p. Okay, so this will update the track of maximum page one book has, a single book, and we will add the number of pages in the answer, so answer plus equals to p. So what we are doing, basically what we have, the maximum possible आंसर विल बी सम ऑफ ऑल द बुक्स. अगर एक स्टूडेंट को हम एक भी बुक ना दें, इट विल हैव 0 एंड द अदर विल हैव सम ऑफ ऑल द बुक्स. ओके, तो द एक्चुअल रेंज विल बी फ्रॉम द maximum number of pages one single book has to the total sum here is 223. Okay, so now what we can do, here we can do the binary search, and we will check if we can allocate the separation to the given number of students. अब इसके आगे मुझे भी समझ नहीं आ रहा how I done the questions. Where is Striver's A to Z sheet? I had solved this in binary search on answers. Boom. Step number 4 was that. Allocate books problem कहाँ है इसमें? Painters partition, minimize maximum distance to gas station. इसी के जैसा क्वेश्चन है ये. Cocoating banana and root of a number using binary search. Minimize maximum distance to gas station.
we find out the highest possible answer is this, the sum of all the pages that we have. Smallest possible answer is this. This is the range of our answers, and we need to apply binary search to find out the minimum maximum number of pages that a student can get. Nine or solve. Allocate minimum pages. It is a medium problem. And what topic it test on? Divide and conquer problem. How did I solve it earlier? Submission on 19th of September. What I did, students needed is possible helper method create किया मैंने find pages के लिए we have k greater than arrow dot length low high page and here we use this is possible method, and in this is possible method what we are doing, at least one student is needed, pages for current student. Okay, so number of pages should be less than the maximum pages allowed, plus page is less than equals to maximum pages allowed, plus equals to page as students needed plus plus page for current student is equals to page. Hello, Swarit, you're back. I could not solve this by my on my own. How did I come up with this solution? It was on 19th September. That must be day number 18 or 19. Let me help. Just wait a second so I can turn my laptop on. Yes, I'm here only. Okay. Here is Okay, the now book we will solve allocation this problem. problem, book allocation problem, okay? If And what I you was guys, most probably I might have copied it from ChatGPT.
or have I solved it by myself? Yes, and कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं थी ना? Watching my own tutorial, If the and we need to and then I'm doing फिर the हम same thing that I did on the live stream. k number of students to test maximum. Define the search space. Okay, low is equals to maximum pages and high is equals to sum of all the Number of pages. pages that a single student can be assigned. Of pages any student is allowed to read. Okay. If locate that find ठीक है इस पर्टिकुलर चेकिंग फंक्शन को हम क्या बोलेंगे कुछ नाम दे देते हैं क्या नाम दे कैन बी लास्ट is possible this made value so what we will write but we want the mini shall answer try to try to we false we go a higher it means one let's पानी पी रहा हूँ अच्छा मैं लाइव स्ट्रीम में पूरा स्क्रीन शेयर करता था तब enough you know 8,000 views in जब last 28 days. पे रखें हाँ राहुल भाई if page is greater than max page then So we need to create a helper method. It's like um, public static boolean is possible in array as input. So arr comma in students and maximum pages. Maximum pages allowed. So let's call it m and long maximum pages allowed. Max pages बोल देते हैं इसको एंड मैक्स इन को मैक्सिमम पेजेस ही है ना मैक्सिम मेरे स्कूल का इंस्टाग्राम अकाउंट मुझे फॉलो कर रहा है दैट्स ग्रेट
it not work out? Yes. Location problem is also done. Wait, करनी चाहिए. और मैं घर पे रहता हूँ फैमिली के साथ। तो मैंने हाई माइनस लिख दिया. So there will be no aptitude round, it is only coding based round, जितना मुझे पता है। और आई थिंक तुम्हें ऑलरेडी लाइक पहले ही फॉर्म के लिए लिंक आया होगा फ्रॉम योर कॉलेज टू अप्लाई फॉर इन्फोसिस प्लेसमेंट, जो सिस्टम इंजीनियर के लिए था शायद पहले, बट दे हैव चेंज्ड द रोल्स नाउ। अमितेश, अच्छा अमितेश, ओके। फॉर्म फिल किया था अपने कॉलेज से ही तो आया था ना, इन्फोसिस में अप्लाई करने के लिए, सिस्टम इंजीनियर वाले रोल के लिए था वो शायद तब। हाँ, 3 आवर्स तो सबके लिए रहेगा, उसमें क्या कंफ्यूजन है। 3 आवर्स का टेस्ट होगा। हाँ तो फिर प्रिपेयर। We have as long and long low is equals to maximum and we will create a variable answer which will store high. High is the sum of all the numbers. Oh, we have a hamster on our chat. Hello, hamster. Hamsters. This is not a good way. I will block you, hamster. कर दो टाइम आउट। कर दिया। बड़े बड़े लोग।
while low is less than equals to high, and we'll get mid. Low plus high minus low hamster land. Mr. Hamster, if is possible with this array and number of students is k and mid liquid answer is equals to mid y is equals to mid minus 1 and y again. Else, if it is not possible, we will update low with mid plus 1 and we will return answer. And helper method कहाँ है? The maximum number of pages will be mid, and if it is true, our answer will store mid and the high will get updated and is the number of students. इसको देख ही रहने देते हैं ना. Required students equals to 1 long current. I will check out after solving it. Then 4 int p in array. We will check if current sum. Hey Nikesh Kumar, how are you, buddy? Current sum plus p is less than equals to max pages. अगर current sum plus p, that is the number of pages of the current book, is less than equal to maximum possible pages, we will add it. Otherwise, thank you so much, शुक्ला जी. कैसा चल रहा है काम? थंबनेल कैसा लग रहा है आयुष आज वाला? स्टूडेंट्स current sum equals to p and if required थोड़ी देर से required students is greater than k, right? मिस यू टू भाई. एग्जाम्स हैं अभी तो. मैं आता हूँ क्या पुणे? तेरे ऑफिस का टूर दे दूंगा लाइव स्ट्रीम में. ये रिक्वायर्ड की स्पेलिंग गलत कर दी, फिर मैं कहूँगा कि क्या गलत हो गया. रिक्वायर्ड स्टूडेंट्स इज ग्रेटर देन के
we will return false. And if all the conditions are met, we will come through. थंबनेल को देख के ये तो आया, ऐसे नहीं आ सकता, थंबनेल अच्छा नहीं बना होगा तो। यार याद आ रही है। आंसर प्लस इक्वल्स पी, कहाँ गड़बड़ है? लाइन नंबर 30। इट इज नॉट क्रिएटेड। यहाँ तो सम होना था, इसको क्यों आंसर कर दिया? अभी भी कोई गड़बड़ तो नहीं है। आज तो छुट्टी होगी ना आयुष? अभी भी देख रहा है क्या? या आज भी काम कर रहे हैं? सबमिट। भाई कोई टिप्स एंड ट्रिक्स, इन्फोसिस कैसे क्रैक करें? आपने की थी क्या इन्फोसिस भी क्रैक? चार कंपनी में से एक। शुक्ला जी। फैमिली मैन सीजन 3 चल रहा है बस। सही है, एंजॉय। मुझसे पुराने प्रॉब्लम्स ही सॉल्व नहीं हो रहे हैं जो मैंने खुद सॉल्व किए हुए हैं। नेक्स्ट परम्यूटेशन। इस टॉपिक से आ गया। एरेज एंड परम्यूटेशन। The next permutation of given array is 2। अच्छा ठीक है, मैं नहीं बैठा था इंटरव्यू तक, पहुंच जाओ बस। अच्छा, लास्ट ईयर तो वो 3.5 एलपीए के लिए ही आई थी ना, बस एक ही जॉब रोल के लिए। इस बार उनने थोड़ा चेंज कर दिया उनका रोल स्ट्रक्चर। इस बार 21 एलपीए तक के लिए आई है। डीएसई से स्टार्ट है, डिजिटल सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐसा कुछ करके है। 6.75 से स्टार्ट होकर 21 एलपीए। इसी वजह से तो मैं इतना प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। 3.5 होता तो आई वुड नॉट एलिजिबल। बहुत ज़्यादा, मतलब इजी क्वेश्चन भी डिफिकल्ट रहेगा, और जो मीडियम और हार्ड हैं वो तो फिर रहने वाले हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग और ग्राफ और ट्रीज से। तो प्रिपेयर तो करना पड़ेगा। एवरेज फ्यूचर इज ओके।
7671 and 21. कम से कम 24 LPA. What do you mean, Nikesh? Highest package is 21 LPA from Infosys this year. तो मैंने अभी कर दिया. ये रिपीटेड है क्या? मैक्सिमम एलिमेंट लार्जेस्ट एलिमेंट दो बार रिपीटेड है. स्टॉक बाय एंड सेल. डिस्चार्ज हो गया. बिल्कुल भाई. नेक्स्ट मंथ डन. और नहीं भी होगा तो भी चलेंगे. अभी तो आपका एग्जाम चल रहा है. यस प्रो, एग्जाम चल रहा है. 25th से स्टार्ट हो जाएगा. डन भाई डन. पक्का. हाँ, अभी मैं सोच रहा हूँ छोटा सा ब्रेक ले लूँ, उसके बाद कंटिन्यू करूँगा. और तुम भी फैमिली मैन एंजॉय करो, शुक्ला जी, एंड ऑल ऑफ यू whoever इज वाचिंग. जॉब लगने के बाद अगर आना हो तो बिल्कुल भाई स्वरित, आ जाऊंगा मैं. इस बार इंफोसिस के पार. डन भाई डन. Given an array prices of land and representing the prices of the stocks on different days, the task is to find out. अच्छा ठीक है, आई एम टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक. डिनर भी करना है. आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू. मैंने किसी के मैसेजेस मिस किए क्या? एंड वी विल मेक अ स्ट्रक्चर के नेक्स्ट 10 days में हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर इंफोसिस. टुमारो इन द मॉर्निंग we need to do we need to prepare for her and some exams also. वो तो मैं भूल ही गया था कि मेरे एग्जाम्स भी हैं. एग्जाम में आता ही क्या है, एग्जाम में आता तो है, क्वेश्चंस तो आते हैं, लिखना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ. उसके लिए एटलीस्ट टॉपिक्स तो पता होने चाहिए.
इन्फोसिस से तो सब कुछ इजी है। इन्फोसिस का हैक विद इन्फी के क्वेश्चंस ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थे। आरजीपीवी में वैसे भी पास आउट हो जाते हैं। यस, हो तो जाते हैं, बट फिर भी क्यों चांस देना फेल होने का। बैक तो नहीं चाहिए ना। अगर बाई चांस बैक लग जाती है तो वी विल लूज आवर ऑफर्स फ्रॉम ऑल द कंपनीज। अच्छा, अब मैं जाऊं? तुम लोग भी ब्रेक ले लो 15 मिनट का। इन्फोसिस खुद बहुत इजी है। आई होप जब मेरा टेस्ट हो तब मुझे भी ऐसे ही लगे कि इन्फोसिस बहुत ही इजी है। एस जी, हाँ।
Hey guys, we are back again. Mm. 1.3. Is there anyone live in the live chat? या सो रहे हो तुम? जो भी कोई है. We were about to solve stock buy and sell problem if maximum one transaction is allowed. As we have started this series, check if the array is sorted, remove duplicates. I need to solve one problem on lead code. Hey Swarit, are you there in the chat? Zigzag conversion. See how we have solved most of the initial problems. Regular expression matching and zigzag conversion. The string people people is written on zigzag pattern on a given number of rows like this. You may want to display this pattern in a fixed font for better legibility and then read line by line. People is hiring. Okay, this means 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, 4, 8, 12. Three words horizontally, fourth one, sorry, three letters vertically, then fourth one horizontally, then three vertically, then fourth one horizontally, then three vertically and fourth horizontally, and then the remaining vertically. So we need to find, and we will read it line by line. PAHN APLSIIGYIR. So this is like a encryption. Write the code that will take a string and make this conversion given a number. Hey Vamsavardhan, how are you, buddy? Write the code that will take a string and make this conversion given a number of rows. Okay, so we will have the number of rows. And is it a easy problem? It is not a easy problem. And what about your exams? Are they over? Are your exams over?
Mm, we will have n number of rows, but the number of columns will depend on the length of the given string. So what we will do, for example, this is the given string and number of rows is 3. What are you doing, Vamsavardhan? Have you started learning DSA or just stuck at your exams? Okay, that's great. You can start right now. And which semester was this? तुम्हारा कौन सा सेमेस्टर था वंशवर्धन? थर्ड और फोर्थ? So if we have 3 minus 1, what do you mean? Second semester was that or the third one? If we have number of rows is equals to 3, then we need columns equals to the length of the string divided by 3 plus 1. Am I right? For the current string, the length is 3, 3, 6, 3, 12, and 3, 15, and 2, 17. So it will be written as not only not चाहिए. Okay, you should have done that earlier. अगर फोन से डिस्ट्रैक्ट होते हो तो उससे पहले ही बॉयकॉट कर देना था. PAY, then here we have T. Okay, the length of given string is 17. The number of rows is equals to 3. And if we need to find the number of columns, okay, all the best, Vamsavardhan. And where are you starting from? What will you learn today? Oh, okay, ठीक है. If the number of rows is 4, nothing is perfect, buddy. Just start solving problems
जितना भी बेसिक्स रिवाइज हो जाए उसके बाद सॉल्व सम प्रॉब्लम एंड यू विल गेट थ्रू इट। ये क्वेश्चन इतना कंफ्यूजिंग क्यों है? Here, अच्छा ठीक है, they have written the same example that was given in the explanation. Okay, so there will be four letters horizontally as well. Mm, S consists of English letters, lowercase and uppercase, and comma and full stop. I mean, sometimes I will got syntax. I will get syntax. Okay. Revise the concepts and start solving problem. That is the only advice I will give. Okay, I got it. I'm thinking of storing it in okay, what we can do, we can create n if n is the number of rows. अच्छा ठीक है, यहाँ पे ना करके यहाँ पे करते हैं. So if it is given that we have n number of rows, that means 3, so we will create 3 strings. Okay. Hey Nikesh Kumar, you're back. What are you doing? How are you? Okay, Vamsavardhan, all the very best. I hope you do it well. 3 minutes and ठीक है. What we can do, we will create 3 strings s1, s2, s3, s1, s2, s3, and what we will do to create the zigzag pattern, we will add the first character in the first string, second character in the second string, and third character in the third string. Okay, and the fourth character in the previous string, that will be s2, and the next character in the previous string, that will be the first string, and it will be in the s1, that will be a. Okay, and the next letter in the s2 string. Okay, so apple. Okay, इसका I is hiring के लिए H यहाँ आ जाएगा, I S, and hiring का H यहाँ, hiring का I R I N G. So what we need to do? Hey Nikesh Kumar, what are you doing? You didn't respond. We have 3 strings. Okay, मतलब if n is the number of rows, then we will create n number of strings, and one by one we will add the character to those strings. Do we need to create a string builder? Okay, we will use a string builder. And what are you doing? Like, you're in first year, what are you trying to understand? Have you started solving DSA problems? Are you getting what I'm solving? और मेरी आवाज आ रही है ना clearly? I have no idea. Yes. Okay. And then what we will do, we will add s1, s2, s3 and return.
S1 plus S2 plus S3, and we will return it as our answer string or whatever we call it. Hmm. We need to think of the logic that starting from the first one, we will move to the last and then get back and forth. How do we do that? एक तो we can use string builder 1, string builder 2, string builder 3. Hmm. ऐसा कोई कांस्टेंट है क्या? Number of length of the string is 1000 and number of rows is equals to 1000. We cannot create 1000 strings. What else we can do? Is there any other approach? Zigzag pattern. This, this. Okay, there is another possibility. Let's say if there are n number of rows, that means the first letter will be in the initial. We can iterate over the complete string. If n is the number of, if 3 is the number of rows, then let's say we are creating 3 strings. So it will be on the first string, it will be on the second string, it will be on the third, and then the next one will be on second, and the next one will be on the first. So the gap between the letters is of 3 characters, right? So इसके बाद भी ऐसा ही रिपीट होगा 2 3 2 1 2 3 2 1 and this is 2. So what we can do
Starting from the first index, we will add this character to our answer and then add the number of rows and the character at that particular index we will add it to our answer, and we will do this. Hmm, ओके, कुछ तो आइडिया आया. We can come up with the answer. अगर इसके अलावा 4 was there, it is clear, मानी नायक, it is clear, it is possible, it is possible. मतलब अभी तो मुझे समझ आ रहा है थोड़ा. This is the approach. First we will iterate over the first row, मतलब we will add the characters on this one index, or फिर wherever the index is marked as 1, we will add these character to our answer, and then we will add all the 2's. Slip हो रहा है पूरा. Let's say if the number of rows was equals to 4, then what would have happened? A equal is, bro, I have created projects in Munstack, but I want to learn Java full stack development. So I will be working on Java full stack. और उसका फ्रंट एंड तो सेम ही रहता है, बैक एंड सिर्फ जावा से सीखना है. You missed nothing. I have just started solving zigzag problem. People is hiring. Hiring. कोर कॉन्सेप्ट्स, व्हाट डू यू मीन कोर कॉन्सेप्ट्स आता है मुझे या नहीं? लाइक इट्स डिसेंट, के मतलब एकदम डम्ब भी नहीं हूँ मैं और एकदम एक्सपर्ट भी नहीं हूँ मैं. लाइक ऊप्स डीबीएमएस ठीक ठाक है. ऑपरेटिंग मतलब ऊप्स डीबीएमएस स्ट्रांग है, और ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल पे रिवाइज कर लेता हूँ तो स्ट्रांग हो जाता है. तो जब भी कभी किसी कंपनी में अपेयर होना होता है तो मैं रिवाइज कर लेता हूँ. और क्लाउड कंप्यूटिंग तो सिर्फ जनरल नॉलेज के जैसा आता है जितना आता है. और नेटवर्किंग उतना स्ट्रांग नहीं है मेरा, लाइक जो एक्चुअल में. अच्छा ठीक है, सॉरी, बाय बाय, गुड नाइट. And what is happening in this, when we have four number of rows, we will add the first number in the first string, second in the second string. I'm calling it number, it is a character.
Hey, Garib Coder, how are you, buddy? If you like, you can introduce yourself. Are you also a YouTuber? हाँ, भैया कोडिंग सिखा दो भैया खुद कोडिंग सीख रहे हैं एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट भैया इज प्रिपेयरिंग भैया इज डॉक्यूमेंटिंग हिज जर्नी ऑन यूट्यूब यू कैन लर्न फ्रॉम इट आर यू इन कॉलेज जीसी so let's say we have four number of rows the first string will contain this character it will be in the second string the third character will be in third string fourth character will be in fourth string ओके इट हैपन समटाइम्स बट मतलब मेरे केस में और जो मेरे बैचमेट्स हैं उनके केस में अभी तक जो ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटीज आई हैं उसमें सिर्फ जो टेक्निकल असेसमेंट वाला राउंड होता है वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी होता है मतलब बहुत ही हैवी फंडामेंटल्स पूछ सकते हैं कोर सब्जेक्ट्स पूछ सकते हैं कुछ भी पूछ सकते हैं उसमें और एप्टीट्यूड भी ट्रिकी हो सकता है बट इफ़ यू क्लियर दैट फर्स्ट राउंड समहाउ then the interviews are not that difficult. You just need to know about your language, about your projects, and some basic stuff related to object oriented programming, database management system. My native my native place bole to like where I am from, you can say I'm from Bhopal, a town near Bhopal. भोपाल इज लाइक माई होम टाउन मैं थर्ड ईयर सिक्स सेम में हूँ हम्म, तुम्हें तो कोडिंग आनी चाहिए फिर लाइक व्हाट इज योर स्ट्रीम व्हाट इज योर स्पेशलाइजेशन जीसी then we will go up to 4 and then get back after 4 so the next character will be added to the third second first and then again repeat first second third fourth and 3 2 1 and 2 so in this way what we can do when we had three number of rows so the next character was just after the current index plus the number of rows so if this is the current character the next character will be from 0 plus 3 that is 4 1 2 0 1 2 3 and 4 so it will be actually 1 plus 3 and the next character will be at 7th index 5 6 7 8 okay so it is actually number of rows plus 1 that is what we will be adding so it will be on fourth and after that we will add n plus 1 that will be 4 so it will be on 8th index after that we will add 4 again that is n plus 1 uh, Malik Nayak is saying sorry for why सॉरी किस लिए मानिक हैं मैंने ये क्या कहा क्या फॉर वाई आई जस्ट मीन के किस लिए भाई मैंने पहले एथिकल हैकिंग करने का सोचा था पर मुझे ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स लगा हाँ ब्रो होता है समटाइम्स मैं भी सोचता था डेटा साइंस और मशीन लर्निंग की तरफ जाऊंगा बट इट इज़ एक्चुअली डिफ़िकल्ट मैंने
You should research, you should do some research before starting, before learning something, starting to learn something. ओके, मेरा फोन बंद हो गया. I need to do something about it. Where's my charger? Wait a minute, guys. मुझे एसक्यूएल आता है, जावा में एडवांस करना है, दोनों में बेसिक हूँ. इट्स ओके, मतलब एक्चुअली अगर तुम्हारे कॉलेज में कंपनीज आती हैं तो तुम इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट से भी काम चला सकते हो, बट इफ़ यू आर अपेयरिंग इन ऑफ कैंपस तो तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा. वेट अ मिनट, हाँ, चार्ज पे लगा. What did I say to you? I hope I'm able. Audible. तो हम कहाँ थे? So what we will do, we will only add the characters at these indexes. That is number of rows plus 1 plus the current index. After that we will, what we will do, for the next row we will do n minus 1. Okay, that is 3 minus 1, that is 2. So the first character will be at 1 and the next character will be at 3. That is 1 plus 3. डीएसए की कोई अच्छी सी शीट. ब्रो, यू कैन फॉलो स्ट्राइवर्स ए टू जेड शीट, वही मैंने किया है. और लाइक फॉर रेफरेंस यू कैन ऑल्सो फॉलो माई 45 days ऑफ कोड चैलेंज, जिसमें लाइक मैंने फर्स्ट डे से जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं स्ट्राइवर की ए टू जेड शीट में, वो मैंने पूरा लाइव डॉक्यूमेंट किया है. और द बेस्ट शीट आई वुड सजेस्ट कि चैट जीपीटी पर जाओ और उससे कहो कि लाइक उसे बताओ कि तुम्हें कितना आता है कितना नहीं आता है, और उससे पूछो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में एकदम इजी से क्वेश्चंस कौन से हैं, कितने टाइम में मैं सॉल्व कर सकता हूँ, और उन्हें सॉल्व करो. उनका लॉजिक बिल्ड करने के लिए भी चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हो, बट डोंट गेट डिपेंडेंट ऑन दैट. थोड़ा मतलब उससे क्वेश्चंस की लिस्ट बनवाओ और उन क्वेश्चंस को खुद से करने की कोशिश करो. ब्रो, मैंने 45 दिन में उसके 240 क्वेश्चंस किए हैं, तो तुम्हारे पास तो बहुत टाइम है अभी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तुम रेफरेंस के लिए उस शीट को देखो, बट एक्चुअली तुम अपने हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. और मैंने एक्चुअली उससे कई ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. एक तो अब मुझे अजीब लग रहा है क्योंकि मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं है कि मैं दिख भी रहा हूँ तुम लोगों को या नहीं दिख रहा हूँ. एम आई विजिबल? आई होप सो. यू कैन स्टिल सॉल्व दैट शीट ब्रो, मतलब तुम्हें पूरा पूरा टाइम देने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट गिव 2 to 3 hours every single day to DSA and you can still solve. 6 months are approximately 180 days. You can easily do that. I am doing it in 100 days. मतलब मैंने पहले चैलेंज लिया था कि मैं 45 डेज के अंदर उसके 455 प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, बट मुझसे नहीं हुए. 240 कुछ हो पाए 45 डेज के अंदर, तो मैंने उस चैलेंज को एक्सटेंड करके 100 डेज कर दिया. तो अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं हार्ड वाले, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्राफ, क्वीज, इन सब से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो मुझे रिमेनिंग 55 डेज में करना है, जो कि मुश्किल है अभी भी, बट आई विल ट्राई टू डू दैट. क्या मेरी आवाज़ नहीं आ रही है क्या? मेरी आवाज़ आ रही है ना? लाइक चेक.
Okay, the next row will have n minus 1, and after that, the third row will have n plus 1 again, right? N plus 1. And that is it. Hey Satvaj, how are you? कैसा चल रहा है कोहोर्ट शेरियन कोडिंग स्कूल का? मैंने लिंक्डइन पोस्ट देखा था तुम्हारा, बहुत अच्छा लगा वो जो प्रोजेक्ट तुमने बनाया। और एक वो म्यूजिक वाला प्रोजेक्ट था कोई, इंस्ट्रूमेंट्स वाला, पियानो बजाने वाला, वो भी बहुत ही अच्छा था। करते हैं, कल करते हैं भाई। अभी तो स्ट्रीम करना है। ब्रो, मैं जब एथिकल हैकिंग करने का ट्राई कर रहा था तो मैंने सोचा था कि एसजी भाई से अच्छा हो जाऊंगा। तुम एसजी भाई के थ्रू आए हो? हाउ डू यू नो एसजी भाई? अभिषेक की स्ट्रीम पे मिले थे क्या? अभिषेक? नहीं, तुम अभिषेक को भी नहीं जानते होगे, अभिषेक पांडे। नो एडिट एचडी। एसजी भाई का लेवल कुछ ज्यादा ही ऊपर है यार। वो एक, मैं क्या बोलूं, ही इज अ किड। ही इज फेमस एक्चुअली। मेरा लॉजिक सही है या नहीं अभी इस क्वेश्चन में? And for the third and the last row, we will repeat the same thing. And if we are talking about four rows, we will have first क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ इन्फोसिस की प्रिपरेशन के लिए, जो इन्फोसिस में पूछे जाते हैं फ्रिक्वेंटली। सतवज, मेरा फ़ोन एक्चुअली बंद है सतवज, अभी वो चार्ज पे लगाया है। तो मे बी आफ्टर द स्ट्रीम वी कैन टॉक। अभी तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके जाऊंगा खुद से, बिना किसी हेल्प के। So, okay, if we have four rows, what we will do, we will add the first character and the first character plus n plus 1, that will be 5. So 0 plus 5 will be fifth. So 0 indexes यहाँ लिख देते हैं, 0 1 2 3 4 5 and 6। बट अभी हमारा लॉजिक फेल हो जाएगा if it is the zeroth index and we are doing what? We are doing adding n plus 1 to our current index. यहाँ पे क्या किया था, 3 plus 1 किया तो 4 आया, and then 4 plus 4 किया तो 8 आया। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, यहाँ तक तो वैलिड था। बट when we have 4 rows, what we will do, so maybe it is equals to n plus n minus 1। यहाँ पे नेक्स्ट टाइम 1 कब आएगा, सिक्स इंडेक्स पर। उसके बाद 1 कब आएगा, 7 8 9 10 11 12, ट्वेल्थ इंडेक्स पर। So what is the pattern? If we have 4 rows, it will have 5 characters. So it is like n plus
NS4. Okay, GC, you can follow Strava's A to Z sheet also. लीड कोड का ट्यूटोरियल दो 2 मिनट के लिए प्लीज. व्हाई नॉट सतवज? ट्यूटोरियल क्या देना है? लीड कोड ओपन करो, लीड कोड पे प्रोफाइल बनाओ, और जब तुम प्रोफाइल बना लोगे तो कुछ ऐसे पेज पे आ जाओगे शायद. एक्सप्लोर पेज पे आओगे तो शायद ऐसा. स्टार्टिंग में ये बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, मुझे भी लगता था लीड कोड ओपन करते से ही. एंड तुम्हें इसकी आदत ऐसे होगी कि जब तुम कोई भी, ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, तुम चाहो तो देख सकते हो डायनामिक प्रोग्रामिंग की गाइड. ये वाली जो गाइड है ना, लीड कोड बिगनर्स गाइड, इसको फॉलो कर सकते हो टू अंडरस्टैंड कि लीड कोड कैसे काम करता है. और मे बी सीखने के लिए भी कर सकते हो. बट जब तुम कोई शीट फॉलो करोगे जैसे स्क्राइबर की टू जेड शीट, जिसमें स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है, तो वहाँ पे तुम्हें लिंक मिल जाएगी लीड कोड के क्वेश्चंस की. तो तुम उस लिंक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली तुम प्रॉब्लम पे पहुंचोगे. और अगर तुम्हें लीड कोड की के प्लेटफॉर्म पे प्रॉब्लम्स देखने, तो यहाँ प्रॉब्लम्स पे क्लिक करना, और हियर यू विल गेट द प्रॉब्लम्स. सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स है लीड कोड पे, वो लिस्टेड होंगे यहाँ. सो यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम. सॉल्व करने के लिए, लेट्स से यू आर सॉल्विंग टू सम प्रॉब्लम, तो यहाँ पे क्लिक करना उसके ऊपर. यू यू विल रीच टू दिस इंटरफेस. यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है, ये विंडो है, इसमें तुम्हें कोड लिखना रहेगा. यहाँ से तुम लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ से रन कर सकते हो. देयर इज अ रन बटन, सबमिट बटन. रन बटन सिर्फ अभी लोकल टेस्ट केसेस रन करेगा. सबमिट बटन पर क्लिक करोगे तो सारा वो सबमिट हो जाएगा, और सारे टेस्ट केसेस चेक करेगा वो. GC Singh, is SG Bhai really a kid? How do you know, bro? I know because he has proved me. I was also not believing कि वो बच्चा है, but he showed me his स्कूल का आईडी कार्ड, उसका आधार कार्ड, एंड एवरीथिंग that is required to know that he is a kid. Hmm. Satvaj, are you still there or am I wasting time? No, I have not met SG Bhai, but on video call. Q&A रखो सीनियर सर, बिल्कुल रखते हैं. बट टाइम नहीं है अभी, मेरे एंड सम एग्जाम्स भी हैं और इन्फोसिस के लिए प्रिपेयर भी करना है, तो लेट्स सी. दिसंबर में रखेंगे. दिसंबर के फर्स्ट वीक में, फर्स्ट और सेकंड वीक में, जब मेरा ये इन्फोसिस का टेस्ट हो जाएगा. बट मैं कहाँ था? आई वॉज ऑन zigzag कन्वर्जन प्रॉब्लम. क्या क्वेश्चन पूछना है सच, जब भी पूछ ले. हाँ भाई, यू कैन आस्क मी हियर इटसेल्फ. क्या ही क्वेश्चन पूछने तुम्हें? कहाँ गया मेरा अप्रोच? हम्म. सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? दिस टाइम वी हैव टू मोर मेंबर्स. नहीं, मैंने पूरा वेब डेव नहीं किया. पूरा वेब डेव कोई नहीं करता है. मतलब ठीक है, किसी को आता होगा, बट पूरा वेब डेव किसी को नहीं आता है. यू कैन लर्न सम ऑफ द टेक. मतलब मैंने HTML किया है अच्छे से, CSS किया अच्छे से, जावास्क्रिप्ट किया है, लाइक बहुत अच्छे से तो नहीं. आई हैव नॉट मास्टर्ड जावास्क्रिप्ट. उसके बाद रिएक्ट भी थोड़ा, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए जो उसके बेसिक्स रिक्वायर्ड होते हैं, स्टेट, कंपोनेंट, इवेंट, और सारी चीज़ें, वो देखा है. मेनू आता है वेब डेवलपमेंट में, उसमें IBM सर्टिफाइड हूँ. ओके सत्यवज, यू कैन टेक एडवाइस फ्रॉम SG भाई, इसको सब आता है. और ही इज द किड जिसकी बात कर रहा है, गरीब कोडर. बीइंग इम्प्रेस्ड.
Okay, he a kid. इतना कुछ करने के बाद पूछ रहा है इसमें अच्छा जॉब मिलेगा या नहीं ब्रो। डेफिनेटली मिलेगा लेकिन सिर्फ इसके बेसिस पे नहीं मिलेगा। और तुमने तो शेरियंस का कोहॉर्ट ज्वाइन कर रखा है ना, तो वो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करेंगे ही। आई होप। एस जी भाई इस लाइफ पे आते हैं शौक में शौक। वाहे। अभी मैं शौक हो रहा हूँ कि एस जी भाई के इतने फैन है। Here we have and plus two. What difference? And if we had 5 rows, तो क्या होता? People. Inside. क्या इतने सारे क्वेश्चंस पूछती है? लिंक्डइन पे कनेक्शंस कैसे बिल्ड करें? ये तो मुझे भी जानना है। सतवज। अरे तुम्हारे बन जाएंगे। धीमे धीमे पोस्ट करो रेगुलरली। मैंने तो करना छोड़ दिया है। बट कुछ भी तुम पोस्ट करोगे रेगुलरली पोस्ट करते रहो। लोगों के पोस्ट को लाइक करो रेगुलरली। हफ्ते में 2 बार। मतलब लोगों से इंटरेक्ट तो डेली करना पड़ेगा, लाइक दूसरों के पोस्ट पे कमेंट करना, रिएक्ट करना और अप्रिशिएट करना वॉटेवर। और हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार तुम्हें पोस्ट करना पड़ेगा लिंक्डइन पे अगर तुम्हें ग्रो करना है तो। मुझसे तो नहीं होता इतना सब, तो मैंने छोड़ दिया 1-2 पोस्ट करने के बाद। कोडिक्यूल्स ब्रो अभी तो शॉप की बंद है, मैं कल मिठाई ऑनलाइन फोटो में भेज दूंगा खरीद के। मुझे लगा तुम दोनों जानते हो एक दूसरे को। वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स डालूं या नहीं, या बस बड़े प्रोजेक्ट्स डालूं, और सर्टिफिकेशन कहाँ से बनाएं? सर्टिफिकेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है एंड इट्स नॉट दैट नेसेसरी। बट सचवच अगर मतलब तुम प्रोजेक्ट्स बना रहे हो ना डेली डेली तो डाल सकते हो। इट्स ओके अगर तुम्हें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ रहे हैं तो डेफिनेटली डालो, इट्स ओके, तुम्हें खुद मोटिवेशन मिलेगा थोड़ा। और जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके अपडेट्स भी डालते रहो, यू विल सी। मतलब मैं एक प्रोफाइल शेयर करूँगा। अगर तुम्हें लिटरली मतलब लिंक्डइन पे थोड़ा ग्रो करना है तो डेली डेली जो भी तुम पढ़ रहे हो सीख रहे हो उसके बारे में प्रोग्रेस शेयर करते जाओ। मतलब खुद भी रिफ्लेक्ट करोगे कि तुमने आज क्या किया, कल क्या किया, आगे क्या करने वाले हो, उससे रिलेटेड एंड थिंग्स लाइक दैट। तुम्हें ही फायदा होगा वैसे। बट लिंक्डइन पे इतनी मेहनत करने का कोई बेनिफिट एज सच है नहीं, क्योंकि व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर जॉब्स दे आर नॉट actually gonna check your profile, but maybe
What is going on, Swarit? Is he your friend? क्या तुम लोग मुझे उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हो? मैं अभी तक इतनी देर से एक ही क्वेश्चन पर अटका हुआ हूँ, आधे घंटे से। इसका सिंपल लॉजिक है वही में। एंड इन दिस केस there will be 5 rows. 1, 2, 3, 4, 5. And this one will be on 4, 3, 2, 1, and 2, 3, 4, 5, and 4. Is it correct? 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Choose. अच्छा ठीक है, यहाँ पे I missed. And सतवज इज क्या पता मैं कुछ हेल्प करूं, वैसे आई टुडे स्टार्टेड डीएसए विद जावास्क्रिप्ट। दैट्स ग्रेट, अच्छी बात है। डीएसए करना स्टार्ट करो, दैट इज बेटर। क्वेश्चन है zigzag कन्वर्जन, मतलब वी आर गिवन अ स्ट्रिंग, मतलब हमें एक स्ट्रिंग गिवन है। लेट्स से पेपल इज हायरिंग, इस तरह की कोई स्ट्रिंग गिवन है हमको। एंड वी आर ऑल्सो गिवन अ नंबर ऑफ रोज। ठीक है, नंबर ऑफ रोज भी गिवन है, तो इस वाले केस में लेट्स से 3 is the number of rows, k is equals to 3. So what we have to do, each character will be splitted such that it is it becomes a zigzag. Zigzag कैसे बनेगा? फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 रोज है, अगर गिवन 3 है तो वी विल मेक 3 रोज, और तीनों रोज में जो कैरेक्टर्स है ना वो सीक्वेंस वाइज ऐसे लिखे जाएंगे। जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो फर्स्ट रो में, सेकंड कैरेक्टर सेकंड रो में, थर्ड कैरेक्टर थर्ड रो में, और देन इट विल गेट रिपीटेड। जो फोर्थ कैरेक्टर है वो सेकंड रो में आ जाएगा, फिफ्थ कैरेक्टर फर्स्ट रो में आ जाएगा, एंड रिपीट करेंगे इसी प्रोसेस को, तो ऐसे जिगजैग बन जाएगा। और उसके बाद में हमें रिटर्न क्या करना है? हमें रिटर्न करना है कि जो फर्स्ट रो में जो जो कैरेक्टर आया उसको पहले लिखेंगे स्ट्रिंग में, उसके बाद में जो सेकंड रो में आया, थर्ड रो में जो आया, उनको ऐसे लिखेंगे, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? P-A-N, P-A-H-N, और लाइक जो भी ये सेकंड रो में लिखा हुआ है वो यहाँ आ जाएगा, APLSIIG। गॉट इट? और मैं कोई मैथमेटिकल सॉल्यूशन सोच रहा हूँ कि कोई लॉजिक हो जिससे वी कैन फाइंड दैट आंसर डायरेक्टली। सो व्हाट आई एम डूइंग कि अगर 5 रोज हैं, 5 रोज गिवन है, तो जो फर्स्ट, अच्छा ठीक है, इफ द नंबर ऑफ रोज इज 5, यहाँ पे व्हाट आई वाज डूइंग, 4, 4 minus 1. Now I'm going to solve the DSA sheet. Thanks a lot, Codecules bro, for recommending the sheet and giving me the opportunity to meet SGY. Thanks again. Bye. Okay, it's great. SG भाई को ही नहीं पता SG भाई का कोई फैन भी है। That's great. And गरीब कोडर, मेरा नाम हर्षित है. You can call me हर्षित. It will go up to n, and after that n minus 1. So it is like n plus n minus 1. Simply 2n minus 1. It should be correct if I'm not wrong. Oh, oh.
This is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. इसमें एक और -1 लगाओ तो it will match the zero base indexing 2n minus 2. यहाँ पे is it valid 2n minus 2? Yes, it is valid 2n minus 2. Here n is equals to 3. नहीं 3 नहीं 4 है यहाँ पे. तो 8 minus 2 is 6 and कुछ समझ नहीं आया. मेरे फैन कब से बनने लगे मुझे भी नहीं है आइडिया कोई. 6th index. Here it is on 8th index. 2n minus 2th index. But for the next letter, it will be 1 and 5. क्या करूँ घोटाला कर रहा हूँ मैं. मैं जो पहले सोच रहा था वही करेक्ट सॉल्यूशन था इसका कि we will create n number of string builders. See if s is equals to null, that is a empty
string, we will return null, and if number of rows is less than equal to 1, or as dot length is less than equals to number of rows, we will return as itself. Okay, and then we will create string builder rows is equals to new string builder. Okay, एक तो ये array होगा which will store the string builders, and the number of rows will be num rows, and then for int I is equals to 0, I less than number of rows, I plus plus, we will create rows of I is equals to new string builder. सबसे पहला अप्रोच यही था। सिंपल क्या करना था हमें, जितना नंबर ऑफ रोज गिवन है उतनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स बनाएंगे, और एक एक करके कैरेक्टर्स को ऐड करते जाएंगे गोइंग डाउन
कब कब ट्रू होगा जब क्या किया है हमने, एक स्ट्रिंग बिल्डर नाम की एरे बना दी है। ठीक है, एरे के अंदर s1 विल बी स्टोर्ड ऑन द फर्स्ट इंडेक्स, s2 विल बी स्टोर्ड ऑन द सेकंड इंडेक्स, s3 विल बी स्टोर्ड ऑन द थर्ड इंडेक्स। और हम क्या कर रहे हैं, वन बाय वन कैरेक्टर पे इटरेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टर को फर्स्ट स्ट्रिंग में अपाइन कर दिया, सेकंड कैरेक्टर को सेकंड स्ट्रिंग में अपाइन कर दिया, थर्ड कैरेक्टर को थर्ड स्ट्रिंग पे अपाइन कर दिया। और वेन एवर वी आर रीचिंग टू द बॉटम ऑफ द रोज, वी आर डूइंग, मतलब वो हम ऊपर की साइड रिटर्न कर रहे हैं। तो व्हेन वी आर ऑन s3 वी विल मूव अपवर्ड्स। तो जो गोइंग डाउन वाला बुलियन था वो फॉल्स हो जाएगा, और यहाँ पे वी विल स्टार्ट मूविंग अप। तो s2 के अंदर अपेंड हो जाएगा p, उसके बाद में a अपेंड हो जाएगा s1 में, और यहाँ पे हम फर्स्ट रो पे रीच आउट कर गए तो गोइंग डाउन फिर से ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ से फिर हम नीचे आने लगेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे। दिस इन दिस वे द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। Let us submit and see if it runs correctly as expected. कंपाइल टाइम एरर दे दिया अभी से, क्या गड़बड़ कर दी है हमने। रो जो होता, एस नहीं लगाया रो में, कहाँ है रो, रोज ऑफ आई, गुलाब वाला रोज नहीं बट लाइन वाला रो। लेट्स सबमिट इट एंड सी इफ इट इज वर्किंग। And I think we need to create a structure for the upcoming streams, कि हम क्या करने वाले हैं आने वाले दिनों में, कितना कितना कैसे कैसे, and how I am going to solve those questions. अभी strivers it is that sheet में I have solved, I need to solve greedy algorithms, binary trees, binary search trees, graph and dynamic programming. ठीक है, हीप्स को छोड़ दूँ अगर मैं, तो we can start with tree traversal, introduction to trees। अभी कर देते हैं सारा का सारा, लेट्स गो। कोई नहीं देख रहा है तो क्या हुआ। In the world of data structures and algorithms, understanding binary trees lays the groundwork for hierarchical organization and efficient data manipulation. Up until now, we have studied array, linked list, tag, queues, which are the fundamental linear data structures. Binary trees are a different data structure and allow hierarchical organization and the data structure of multi-level sequence. This resembles a tree with branching at each node, expanding the tree in non-linear fashion. Okay, just as the folders, subfolders, and files hierarchical arranged in your computer's file system hierarchically, the binary trees has a similar structure with nodes representing folders and their children node representing the subdirectory or files inside it. Okay. Let's go. Binary trees, nodes, root node, child node, leaf node, full binary tree, complete binary tree, perfect binary tree, balanced binary tree, T generate tree, summary. Uh-oh, who is Gauri Thoma? Her LinkedIn profile is not mentioned. Okay, binary tree representation in Java. Let's go. Okay, binary tree. In Java, binary tree is structured using reference to other nodes, forming a hierarchical arrangement. Left, right data. Okay, in class node, int data, node left, node right, public node key, data is equals to key. Okay, I'm getting
some kind of understanding. In Java, binary tree node is represented using a class that encapsulates the attributes of a node data component. This holds the value of the node, which could be of any data type, integer, string, object. Data component pointer to children, to reference variable, that is left right, points to the left right child nodes respectively. These references stores the memory addresses of child nodes along traversal access to further nodes in the tree structure. Okay, now I got it. The data node will store the data, left and right pointer will store the reference to the left and right node or children's. Node constructor. In Java, the constructor of node class initialize a node with a specific value and sets its left and right reference to null to signify that it doesn't have any children initially. Data is equals to value, left right is equals to null. Initializes both left and right reference as null. This initialization ensures that when a node is created, it does not have any immediate connection to other node. Okay. Node connection. Java utilizes references between nodes, allowing them to refer to other nodes. When creating a new node, memory is allocated for the node object and the node's data is stored within it. Left and right are initialized as null to indicate that the node doesn't currently have any children. The nodes are connected by assigning reference of a parent node to its respective left-right child nodes. So initially we have root node, main node root is equals to new node, root left is equals to new node 2, root right is equals to new node 3, root right dot left is equals to new node 5. What does that mean? 5, 5, 5. Right dot left. Okay, right dot left. Root right dot left. ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं लग रहा? We have created class node. Int data stores the value of that node. Left and right node will store the reference to the left and right nodes. And then we have a constructor which will initialize the node. And let's say node root is equals to new node 1. Okay, we have created a first node. रूट डॉट लेफ्ट इज इक्वल्स टू न्यू नोड 2. ठीक है, लेफ्ट साइड पे एक नोड है दैट इज, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, राइट डॉट लेफ्ट बोला ना. तो लेफ्ट इस साइड है. ओके, दिस इज लेफ्ट, बट राइट डॉट लेफ्ट लिखा है ना, तो राइट तो 3 है. व्हाट डज इट मीन? देखो, रूट डॉट लेफ्ट लिखा तो अपन ने रूट नोड का लेफ्ट नोड बना दिया नेम्ड 2, और रूट नोड का राइट नोड बना दिया 3, एंड रूट डॉट राइट डॉट लेफ्ट, तो रूट का राइट में तो 3 है ना, 3 के नीचे लेफ्ट आना चाहिए फिर. ये 2 के नीचे 5 क्यों क्यों आ रहा है? इट्स सो कंफ्यूजिंग. ये ऐसा क्यों है? राइट डॉट लेफ्ट, तो पहले राइट आना चाहिए ना. रूट डॉट राइट में 3 होगा, 3 के नीचे 5 होना चाहिए था, लेकिन ये 2 के नीचे 5 क्यों है? पहली ही स्लाइड इतनी कंफ्यूजिंग क्यों है? Okay, let's ask ChatGPT to visualize this node structure. ChatGPT, can you visualize visualize this tree structure if the 5 node will be child of 3 or 2? Hmm. The moment you attach a little rebel 5 as the left child of 3, the whole structure snaps into place like a 3D cosmic origami. Picture the tree as a branching translation. Reorganizing becomes left child of 3. हाँ, वही मैं सोच रहा था, बट इनके आर्टिकल में तो कुछ और ही गिवन. कहाँ गया? Where is that article?
इनके आर्टिकल में ये रूट डॉट राइट डॉट लेफ्ट क्यों लिखा हुआ है? लेफ्ट डॉट राइट होना था ना ये। राइट नोड तो अपना 3 है, उसके बाद 3 का लेफ्ट नोड बनाओगे तो ये 3 पे आएगा ना, 2 पे क्यों आएगा? कुछ भी कर देते हैं यार। अच्छा खासा मूड था मेरा पढ़ने का ट्रीज के बारे में, कंफ्यूज कर दिया। चलो ठीक है, ये भी डन हो गया। बाइनरी ट्री ट्रेवर्सल मुझे आ गया समझ में। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ बाइनरी ट्रीज, ये प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं लीड कोड पे अगर कुछ से होता है या नहीं। 219। ओके। अच्छा ठीक है, ये तो टेस्ट केस चेक करने के लिए। Given the root of a binary tree, return pre-ordered traversal of its nodes value. So we need to return a list of integers, pre-ordered traversal. So let's create a list named answer. So list of integers. Oh, oh, कोई comment करके गया क्या? Uh, अब सोने जाना होगा। आंसर भेज दिया डिस्कॉर्ड में। स्केलर ड्रॉप पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। कोई नहीं देख रहा है तो क्या हुआ, एस जी भाई है ना? थैंक यू सो मच बडी। मैं तुम्हारे कमेंट्स ही नहीं देख रहा था। बस बाइनरी ट्रीज के बारे में नॉन कोडर्स के सामने बात मत करना, वरना वो तुमको साइको समझेगा। इसमें पेरेंट को चाइल्ड से सेपरेट करना, पेरेंट प्रोसेस को किल करना, एटीसी आता है। चैट जीपीटी देयर इज नो वन लाइक चैट जीपीटी। बट सही है ना, मतलब मैं खुद डाउटफुल हो रहा हूँ कि मेरा टीचर सही पढ़ा रहा है या गलत पढ़ा रहा है। बट इट इज फाइन। निकेश कुमार एंड मी। हेलो निकेश कुमार, व्हाट इज अप? सोए नहीं तुम अभी तक? व्हाट आर यू डूइंग हियर? प्लीज यार अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मेरा चैनल। What I need to do, three node left, three node right, three node int value this definition for binary tree node, public class tree node. Okay, we have a list of integer named answer is equals to new list. So array list is an interface. Okay, so we have created an array list. Now what we need to do, we are given the root of a binary tree, return the pre-ordered traversal of its node. Pre-ordered traversal क्या होता है? जिसमें we are going to the depth, ऐसा कुछ चेकआउट करना पड़ेगा, मैं भूल गया हूँ प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, here is the concept. Given the root of binary tree, return pre-order traversal. बट प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल के बारे में तो बताओ थोड़ा। लेक्चर देख रहे थे? ओके बडी। Outputted one only root node is present. What do you mean? Given root of binary tree, return the pre-ordered reversal of the binary tree. ये तो पता नहीं कौन सी नशे करके आंसर जनरेट करता है। In one input, root is equals to 1 and 2 का left child is 3. Okay. So our pre-ordered reversal will be 1, 2 and 3. Root is equals to 1, 2, 3, 4, 5. 5 के बाद null क्यों है? And 8. So 4, 5, null is for 3, and 8 is the right child for 3. Then null for 4,
and 4 का right child, 6 is the left child of 5, 7 is graduation means college pass. कॉलेज में जो करते हैं वो ग्रेजुएशन होता है. So our output will be 1, 2, 4, 5, 6, 7 and 3, 8, 9. अच्छा, लग तो इजी रहा था बट इट इज नॉट. लिंक लिस्ट के जैसा है थोड़ा. hmm. So we are given 3 node root. So pre-ordered reversal में we will go keep going left. So 1, 2, 2 का left child 4. जब get null we will get back to the previous node and उसका right child देखेंगे, that is 5, and then उसका left child देखेंगे जब तक हमें null नहीं मिलता. null मिला तो उसका previous node पे जाएंगे और उसका right child देखेंगे जब तक null नहीं मिलता. ओके, तो देयर विल बी वन फंक्शन जो कि लेफ्ट चाइल्ड को देखेगा जब तक नल नहीं मिलता, और नल मिल जाता है तो वी विल गेट बैक टू द प्रीवियस नोड एंड टू द राइट चाइल्ड और उसका भी नल देखेंगे लेफ्ट वाला. तो मेरा ग्रेजुएशन ईयर क्या होगा वो ड्राइवर शीट वाले में अकाउंट बनाते टाइम पूछ रहा है. तुम्हारा ग्रेजुएशन का ईयर होगा, अभी तुम 10th में हो ना, तो 2731 होगा तुम्हारा ग्रेजुएशन ईयर. यू विल बी ग्रेजुएटिंग इन 2031 डे बाय डे. आज ट्रीज तो कंप्लीट करके जाएंगे. क्या हुआ? तुम्हारा ग्रेजुएशन का ईयर 2031 होगा बताया ना. यू विल ग्रेजुएट इन 2031, नॉट 31, 32. अरे 26 में तुम्हारा 10 कंप्लीट होगा, 28 में तुम्हारा 12 होगा, तो यू विल गेट ग्रेजुएटेड इन 2032. ब्रो डिस्क्रिप्शन में है, लेट मी शो यू. जैसे ये मेरा लाइव स्ट्रीम है, इसके डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो यू विल गेट द लिंक. यहाँ पे इंस्टाग्राम कोडिक्यूल्स लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यू विल गेट माय इंस्टाग्राम. ओके, ये रहा, ये मैं ही हूँ. और अगर मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम जानना है तो ये रहा मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम. ओके. वन लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड. इसको अप्रोच कैसे करेंगे मेरे को ये समझ नहीं आ रहा. पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं किसी से, then we will solve this problem.
कैलीग्राफ को रहने दो, बस को जाने दो, दिन को हटाओ, and let's open studio. ओह अच्छा आइडिया है, ऐसी वीडियोस मैं भी बना सकता हूँ। आर यू लॉस्ट इन योर सेकंड और थर्ड ईयर? Follow me. I have created a roadmap. What do you want to learn? Tree data. Okay, tree implementation by telescope. अरे वाह, बाइनरी ट्रीज का वन शॉट करा दिया है। राघव सर ने, मुझे इनका टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है बट इट इज लेंथी। हाय एवरीवन, आप देखिए सभी मेरा का स्वागत है कॉलेज वाला के इस खूबसूरत चैनल पे और पीडब्ल्यू स्किल्स के आपके प्लेटफॉर्म के खूबसूरत ऊपर। चैनल की आवाज स्लो आज हम कीजिए पढ़ने वाले सर। हैं ट्रीज। ट्रीज के अंदर बाइनरी ट्रीज और थोड़ा बहुत प्लीज। इंट्रोडक्शन टू ट्रीज भी। हम एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम काइंड ऑफ आ चुके हैं थोड़ी सी एडवांस, आप कह सकते हो। ट्रैवर्सल ट्रैवल करना मुश्किल लग रहा था आपको, तो यार बाइनरी ट्रीज तो बिल्कुल ही समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कुछ कुछ वैसा ही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लिंक लिस्ट एंड रिकर्जन आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, फटाफट रिकर्जन आता है। अभी आपको अगर बैक ट्रैकिंग नहीं भी आती तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्लीज देख के आओ। पढ़ना है यस, आप पढ़ सकते हो। एक बेसिक रिकर्जन। रिकर्जन में ना दो बातें होती थी, मैं इनफैक्ट लिख लेता हूँ यहाँ पे। बेस अगर केस आपने और मुझसे रिकर्जन कभी पढ़ रखा है, ठीक है, नहीं भी पढ़ रखा तो जिसने भी आपको पढ़ाया होगा, तो एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं कि कॉल के पहले काम, कॉल के पहले काम और कॉल के बाद काम, कॉल के बाद काम। एंड स्पेसिफिकली अगर मान लीजिए एक फंक्शन है, एक फंक्शन है जिसके अंदर मैं कॉल लगा रहा हूं कुछ ऐसे कि कॉल लगा रहा हूं, एक तो वापस से कॉल की लिख रहा हूं, एक रिकर्सिव कॉल लगा रहा हूं, फिर यहां पे कुछ वर्क कर रहा हूं, फिर वापस कॉल लगा रहा हूं, यहां पे भी वर्क हो रहा है, यहां पे भी वर्क हो रहा है। तो ये वाली चीज अगर आपको रिकर्जन में समझ नहीं आई तो ट्रीज को समझना मुश्किल है, तो इसको प्लीज जाके देखो। एंड जिसको भी लग रहा है क्या चीज़ है, रिकर्जन समझ नहीं आ रही, तो यार आप जा सकते हो यूट्यूब पे। यूट्यूब पे कॉलेज वाला नाम का चैनल है ऑफ कोर्स, ठीक है। यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट है, टेंशन मत लो यार, मैं आपको सी और जावा में कंफ्यूज नहीं कर रहा, एक ही बात होती है, बिल्कुल ही सेम सिंटैक्स होता है आपका, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बस समझना। तो यहाँ पे जाके मैंने रिकर्जन इन वन शॉट बनाई थी, बहुत जबरदस्त, संस्कृत ठीक है, सीखो। वन ऑफ माय बेस्ट वीडियोस आई थिंक। इसके अंदर मैंने यार यही एक बार फिबोनाची वाली चीज़ है ना वो, और एक मैंने बताया था यहाँ पे आई थिंक जिगजैग, जिगजैग वाली जो चीज़ है, यूलर्स ट्री, ये जाके एक बार रिविजिट कराना। आई होप आप करके आ चुके होंगे 3-4 मिनट बताने के बाद। तो फटाफट यार लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आज की चेकलिस्ट को देखते हैं। व्हाट इज अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन, धीरे धीरे करके करेंगे यार, ये सब करके क्या ही करोगे आप, ठीक है। आज हम क्वेश्चन इतने सारे नहीं करने वाले, करेंगे लेकिन एक अगली वीडियो आएगी जिसमें भर भर के क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे भी होने वाले हैं, अगले बारे में इंटरव्यू प्रॉब्लम होगी। व्हाट इज अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर? ट्री इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ट्री इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ट्री इज अ हायरार्किकल, हायरार्की, का पापा, फिर उसका भी पापा, उसका पापा, उसका पापा, ऐसे ऐसे करके, मतलब अगर मैं इस पाथ, सॉरी, एनी नंबर ऑफ चाइल्ड नोड्स, ठीक है, तो ये होता है जो हमारी नोड का नाम है, ठीक है, नोड है क्लास। तो बेसिकली अगर मैं नॉर्मल रिकर्जन लगा के बस ऐसे या फिर डिफॉल्ट वैल्यू नहीं आएगी, ए डॉट राइट इज इक्वल टू डी, एंड फिर बाद में जो ई था वो मेरा कहाँ जा रहा था, यहाँ देखिए एक बार, बी के राइट में ई जा रहा है, लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट वो नल होता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये मेरा नल है, ये भी देखो नल है, इसका राइट नल है, इसका लेफ्ट नल है, नल है, नल है और नल है, ठीक है, बहुत बेहतरीन। तो मेरे को करना है बी डॉट राइट इज इक्वल टू ई, तो बन गया मेरा ट्री। इसका मतलब बेसिकली जो मैंने ये बनाया है, इसका मतलब ये जो मैं अभी आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ वो बन चुका है। अब यार आपको ख्याल आएगा कि यार मेरे को ट्री को डिस्प्ले कराना है, मेरे को बताना है कि ट्री बन चुका है और मैं चाहता हूँ हर एक पिता या फिर हर एक पेरेंट नोड प्रिंट हो, उसके साथ उसके चिल्ड्रन प्रिंट हो, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ मैं डिस्प्ले करूँ ट्री को, कैसे, इधर देखिए प्ले करूँ। फॉर एग्जाम्पल इस ट्री को डिस्प्ले करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 2 है, 2 के चिल्ड्रन मेरे 4 और 10 है, 4 के चिल्ड्रन मेरे 6 और 5 है, और 10 का चिल्ड्रन मेरा यहाँ पे 11 है। आई वांट कि मेरा प्रिंट कुछ ऐसे एरो दिखा दो, जैसे 4, 10 इसके ये दोनों चिल्ड्रन है, फिर आप जैसे दिखा दो हाँ 4 के जी चिल्ड्रन मैम, है मेरे 6, 5, फिर कॉलेज आप वाला लिखो चैनल 10 पर के भी मेरे पढ़ाया चिल्ड्रन है है, जिनने। या तो आप सीधा लिख दो नल, यहाँ पे नल भी आ जाए, कुछ भी एक चीज प्रिंट होकर आ जाए, ठीक है, लेफ्ट और राइट भी समझ आए ना, ताकि लेफ्ट और राइट भी समझ आए। तो 10 के चिल्ड्रन है मेरे नल और 11, फिर मैं बोलूँ 6 के चिल्ड्रन मेरे नल और नल ही है, 5 तो 2 के 4 10, 4 के 6 5, 10 का 11, इनके कुछ भी नहीं, मर्जी आपकी। तो ये अगर आप प्रिंट कराओगे तो काइंड ऑफ समझ आ जाएगा कि हाँ कौन कहाँ पे है, कहाँ स्टैंड करता है। तो कैसे किया जाए इसको, कैसे किया जाए, इसको हम करते हैं वाया रिकर्शन, इसको हम करते हैं वाया रिकर्शन। रिकर्शन एक एकमात्र ऐसा टूल है जिसमें अगर मैं रूट को प्रोवाइड करा दूं बस फंक्शन में, बस इस रूट को, दैट्स इट, तो मैं पूरा के पूरे ट्री को स्कैन मार सकता हूं, मैं पूरे ट्री को प्रिंट करा सकता हूं, एकमात्र अगर मैं रूट को पास करा दूं। फटाफट रिकर्शन लगाते हैं कि ये साफ साफ स्क्रीन कर रहा है, दिस इज अ रिकर्सिव ट्री, दिस इज अ रिकर्सिव ट्री, कि देखो यहां से अगर मैं कॉल लगाई तो देखो कॉल कैसे लगता था। अगर आपको याद है हमारा यूलर्स टू ट्री ऐसा बनता था, अगर आपको याद हो, अगर आपको याद, अगर आपको यहाँ पे याद हो, ठीक है, यूलर्स टू ट्री मेरा ऐसा ऐसा बनता था, अगर यहाँ पे भी 2-3 होते, राइट।
ये ऐसे ऐसे जाता था। और तो बेसिकली अगर मैं नॉर्मल रिकर्जन लगा के बस ऐसे ऐसे प्रिंट कराऊँ लेफ्ट से, तो ये देखो ऐसी ऐसी सीन जाती थी। और अगर आपने मुझसे पढ़ रखा है तो उसको हम कहते हैं प्री इन पोस्ट, प्री इन पोस्ट, प्री इन पोस्ट। बहुत बढ़िया। फटाफट यार इसका कोड करते हैं और मैं आपको डिस्प्ले करके दिखाता हूँ कि कैसे। जैसे मान लो हमने एक ट्री बना रखा है, इनफैक्ट हमने यही ट्री बना रखा है ऑलमोस्ट। ये देखिए, बस मैंने वैल्यूज दे रखी है 1 2 3, ये वाली वैल्यूज दे रखी है, उनको हम देख लेंगे। बस वैल्यूज हमारी कुछ भी दे रखी है, हम अपने ट्री को प्रिंट करा के देखते हैं। फटाफट आ जाते हैं कोड के ऊपर, आ जाते हैं अपने इंटेलिजेंट आइडिया के ऊपर और कोड करते हैं। ठीक है, मेरे रूट नोड एक नंबर देता हूँ, बना हुआ है ये क्या है, 1 से 2 3 अटैच्ड है मेरे, फिर हमारे 2 से 4 5 अटैच्ड है और 3 से मेरा 6 अटैच्ड है। एक बार अपने आईपैड पे आ जाते हैं और देखते हैं कि नंबर क्या थे। मेरे पास 2 4 10 6 5 11 ऐसा सीन था। ठीक है, तो एक काम करते हैं, वही वाला काम करते हैं। ठीक है, वही वाला काम करते हैं, 2 4 10 6 5 11। तो मैं इसमें दे देता हूँ अपना 2, फिर यहाँ पे देता हूँ अपना 4, यहाँ पे दे देता हूँ 6 सॉरी 10 6 5 और 11। ठीक है, अब प्रिंट कैसे कराएंगे, यहाँ पे रिकर्जन लगेगा और बहुत सिंपल है। सबसे पहले जैसे मेरा रूट ओके नोड है, एस जी तो मैं जब भी इसको भाई, प्रिंट करूँ, एरो मार के जो इसके गुड लेफ्ट नाइट और राइट है उनको प्रिंट ऑलरेडी। करूँ। एक बारी में मेरे पास रूट का भी एक्सेस है और रूट मैं राइट प्लस भी लेफ्ट सो करके जाऊंगा इसके थोड़ी देर लेफ्ट राइट बाद। का भी एक्सेस है। समझ रहे हो ना, एक रूट अगर मेरे को मिल गया तो मेरे पास बेसिकली, क्योंकि ये कनेक्टेड हो रखे हैं, तो इन तीनों का एक्सेस है। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके आप सबसे पहले नितेश प्रिंट करा दो, कुमार। आप सबसे पहले प्रिंट करा दो जो भी आपका रूट है, जो भी आपका रूट है, रूट डॉट वैल्यू। ठीक है, इसके आगे यार आप एक स्पेस दे दो, इसके आगे आप यार यहाँ पे एक स्पेस दे दो। स्पेस नहीं, इनफैक्ट हम क्या कर रहे थे, दिस स्पेस एरो, एक एरो बना दो, एक और यहाँ पे स्पेस दे दो। ठीक है, आई थिंक दिस इज गुड, यस। अब मेरे को पहले इसका लेफ्ट प्रिंट कराना है, फिर राइट प्रिंट कराना है, लेफ्ट फिर राइट। तो देखिए नल और नल, अब इसकी वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ। पहले रूट नहीं पढ़ा था तो मैं आपको नहीं समझाने वाला, यहाँ पे जाके कभी समझ नहीं आएगा। तो आज एक बात है, यहाँ पे ऊप्स में भी हमने कवर की थी। ठीक है, अगर आपने ऊप्स नहीं पढ़ रखा तो आ जाएगा जैसे यहाँ पे। ठीक है, एंड फिर हम इसके बाद एक काम कर सकते हैं, हमेशा हम लगा सकते हैं प्लस कॉमा लगा दूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लगा दिया कॉमा एंड ये, आई थिंक बिल्कुल सही है। तो अपना लेफ्ट की वैल्यू, अपने राइट की वैल्यू और अपने इसकी कहते हैं लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट की वैल्यू और अपने राइट की वैल्यू प्रिंट करा दी और अपने रूट की वैल्यू। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे क्या करना है, एक बार अपने कंप्यूटर स्क्रीन इधर आ जाते हैं आईपैड पर, आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने 2 को प्रिंट करा दिया। निकेश कुमार सिंह भैया, कुछ टिप्स मिल सकते हैं कैसे लीड कोड के प्रॉब्लम सॉल्व करें? कैसे करते हैं ब्रो? मतलब ज़रूरी नहीं है लीड कोड के प्रॉब्लम ही सॉल्व करो, जीएफजी पे स्टार्ट करो, उस पे इजी इजी बेसिक बेसिक प्रॉब्लम्स करने की कोशिश करो, जिस पे तुम्हें लगे कि तुम्हें कॉन्फिडेंस आने लगे कि तुम प्रॉब्लम्स खुद से सॉल्व कर रहे हो। उसके बाद में 10 से 50 कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना है, इजी इजी वाले, बेसिक मैथ से रिलेटेड, एरे से रिलेटेड, स्ट्रिंग से रिलेटेड। उसके बाद में फिर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करना लीड कोड पे। लीड कोड पे भी ऐसे डायरेक्टली जंप मत करना, मतलब कोई भी टॉपिक जो तुम पढ़ चुके हो उसके बारे में चैट जीपीटी भी क्वेश्चंस की लिस्ट लेना कि कौन से क्वेश्चन तुम्हें प्रोग्रेसिवली करने चाहिए, कि तुमने अगर ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो इससे इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे तुम कौन से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, कौन सा प्रॉब्लम बेस्ट रहेगा। तो तुम्हें वो ही प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करना है जो तुमने कॉन्सेप्ट्स पढ़ रखे हैं। तो तुम वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करना, खुद से बन जाए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बनता है तो डिमोटिवेट मत होना, 1 2 घंटे ट्राई करना खुद से सॉल्व करने का, अगर खुद से सॉल्व हुआ तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो सॉल्यूशन देखना। सॉल्यूशन देखना भी ऐसे कि उसके डिफरेंट अप्रोचेस देखना। तो पहला जो भी बेसिक ब्रूट फोर्स वाला अप्रोच होगा वो देखने के बाद में एक बार खुद से ट्राई करना, मतलब अप्रोच देख लिया एक बार और सेम डे सेम टाइम पे मत करना, लेकिन मतलब एक अगले दिन ना फिर से वही सॉल्यूशन ट्राई करना खुद से करने का। अगर तुम्हें वो कल वाला अप्रोच याद रहता है और तुम फिर से सॉल्व कर दिए तो इट इज बेस्ट, मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। लेकिन अगर वो तुमसे फिर से नहीं हुआ तो कोशिश करना इस बार थोड़ी ज्यादा कोशिश करना कि कल वाला अप्रोच खुद से याद आ जाए दिमाग में और सॉल्व करने की कोशिश करना। हो जाएगा सॉल्व, अगर नहीं होता है तो फिर से सॉल्यूशन देख लेना, कोई बात नहीं। ऐसे अराउंड 20 30 प्रॉब्लम्स तुम्हें ऐसे सॉल्व करने पड़ेंगे, सॉल्यूशन देख देख के, सीख सीख के। कई सारी चीजें ना, मतलब तुम्हें लगता है कि तुमने बेसिक्स पढ़ लिए, लेकिन एक्चुअली कोई बहुत सिंपल सी चीज यूज होती है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो तुम्हें नहीं आती है। वो तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब पता चलेगा कि ये भी कोई कॉन्सेप्ट होता है। जैसे हैश सेट के बारे में तुम पढ़ोगे, शायद तुमने वो कलेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में नहीं पढ़ा होगा, अगर कि हैश मैप क्या होता है, हैश सेट क्या होता है, वो सारे तुम एक बार में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो जब तक तुम यूज नहीं करोगे तब तक उन्हें तुम्हें ना उनका कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आएगा कि वो है क्यों क्यों पढ़ना है इतना कुछ, हैश मैप, हैश सेट और डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग, एरे लिस्ट क्या होता है, स्ट्रिंग बिल्डर क्या होता है। वो जब तुम अप्लाई करोगे ना धीमे धीमे तब तुम्हें समझ आएगा। तो एक एक कलेक्शन फ्रेमवर्क से ना एक एक इंटरफेस, एक एक क्लास को पढ़ते जाओ वाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो ऐसे ही बनेगा। मेरे को भी पूरा कुछ नहीं आता था, अभी भी पूरा कुछ नहीं आता है, कीज ग्राफ ये सब नहीं आता है मेरे को अभी भी,
मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ कि तो लेफ्ट और राइट को प्रिंट कराना है, ये देखिए। फिर जो लेफ्ट मतलब चाइल्ड है ऐसे उसके ही लेफ्ट, होता है, सबको सब कुछ नहीं आता है, किसी को सब कुछ नहीं आता है। थोड़ा थोड़ा करके जो जो समझ आता जाता है उसके प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओ एंड धीमे धीमे आदत बन जाएगी। चाइल्ड था उसके लेफ्ट और राइट को एंड सो ऑन ऐसे ऐसे चलना है, इसको हम कहते हैं लेवल ऑर्डर। टेक्निकली स्पीकिंग इसको हम कहते हैं लेवल लेवल ऑर्डर और से है, लेकिन वो नहीं है। अब अगला मेरे को क्या करना होगा, अगर मैं लगाऊंगा डिस्प्ले लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट नहीं जो भी रूट है डॉट लेफ्ट, ठीक है, फिर वो लेफ्ट एज रूट बन के आ जाएगा। सिमिलरली कॉल लगा दो डिस्प्ले लेफ्ट डॉट राइट, रूट डॉट राइट। अब बेस केस क्या बनाने होंगे, जैसे ही मेरा नल हो जाता है तो रिटर्न, लिंक लिस्ट में जैसा होता था। तो इफ रूट इक्वल टू नल, समझो ना यार, अगर कभी भी नल रूट आ रहा है तो रिटर्न यहीं से दे दो यार, खत्म करो। अब एक बार इस कोड को चला के देखते हैं। ऑल इसमें रूट डॉट लेफ्ट डॉट राइट क्यों लिखा है? समझ रहे हो ना, एक रूट अगर मेरे को मिल गया तो मेरे को बेसिकली, क्योंकि ये कनेक्टेड हो रखे हैं तो इन तीनों का एक्सेस है। तो यहाँ पे इट्स सबसे पहले गुड ना, मुझे अपने रिकर्जन के राइट, प्रॉब्लम, रिकर्जन पे आ गया तो रिकर्जन से रिलेटेड इजी इजी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो, उसे समझो। और मतलब लीड कोड पे डायरेक्ट जंप करोगे ना तो कई बार ऐसा होगा कि लाइक एकदम समझ ही नहीं आएगा कि ये क्या अप्रोच, कैसे सोचा इसके बारे में, आंसर दिमाग में कैसे आया होगा। ये सारी चीजें ना शुरू शुरू में एकदम से एकदम न्यू लगती हैं कि मतलब वही क्वेश्चन तुम ट्राई कर रहे थे, तुम इतनी सारी अप्रोचेस सोच रहे थे लेकिन तुम्हारी अप्रोच एकदम अलग थी, मतलब गलत थी। और जो एक्चुअल अप्रोच होनी चाहिए उसके आसपास भी नहीं थी। ऐसा होता है कई बार स्टार्टिंग में, तो उससे डिमोटिवेट मत होना, वो सबके साथ होता है। सॉल्यूशन देखना, समझने की कोशिश करना और ये वाली अप्रोच याद रखने की कोशिश करना जो एक्चुअल करेक्ट वाली अप्रोच है। और नेक्स्ट टाइम जब भी तुम्हें वो सेम प्रॉब्लम दिखे या उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दिखे तो ट्राई टू हैव द सेम अप्रोच बाय योरसेल्फ। मतलब तुम्हारे इंट्यूशन में ही वही अप्रोच आ जानी चाहिए। राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप सबसे पहले प्रिंट करा दो, आप सबसे पहले प्रिंट करा दो यार, आप एक स्पेस दे दो, एक और यहाँ पे स्पेस दे दो, तो देखिए नल और नल भी आ जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो वापस से प्रिंट करा दो रूट डॉट लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट डॉट वैल। आप समझना मैं करना क्या चाह रहा हूँ, पहले रूट को प्रिंट करो, उसके लेफ्ट को प्रिंट करो और उसके राइट को प्रिंट करो। आई थिंक इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, दो डॉट्स में आ रही है तो आपने लिंक लिस्ट नहीं पढ़ रखा, तो मैं आपको नहीं समझाने वाला यहाँ पे, जाके लिंक लिस्ट पढ़ के आओ, ये बहुत ही बेसिक बात है, यहाँ पे ऊप्स में भी हमने कवर की थी। ठीक है, अगर आपने ऊप्स नहीं पढ़ रखा, लिंक लिस्ट नहीं पढ़ रखा, रिकर्जन नहीं पढ़ रखा, आपको ये कभी समझ नहीं आएगा। तो आ जाते हैं, पहले हमने देखो इसका ये प्रिंट कर दिया, फिर ये आ जाएगा जैसे यहाँ पे, ठीक है। एंड फिर हम इसके बाद एक काम कर सकते हैं, हमेशा हम लगा सकते हैं प्लस कॉमा लगा दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया कॉमा एंड ये, आई थिंक बिल्कुल सही है। तो अपना लेफ्ट की वैल्यू, अपने राइट की वैल्यू और अपने इसकी कहते हैं लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट की वैल्यू और अपने राइट की वैल्यू प्रिंट करा दी और अपने रूट की वैल्यू। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे क्या करना है, एक बार अपने कंप्यूटर स्क्रीन इधर राइट की वैल्यू प्रिंट करा दी और अपने रूट की वैल्यू। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे क्या करना है, एक बार अपने कंप्यूटर स्क्रीन इधर आ जाते हैं आईपैड पर, आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने 2 को प्रिंट करा दिया, फिर ये भी प्रिंट करा दिया, इसका लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड भी मैंने प्रिंट करा दिया। अब मेरे को अपने लेफ्ट चाइल्ड के लेफ्ट और राइट को प्रिंट कराना है, फिर मेरे को अपने राइट चाइल्ड के लेफ्ट और राइट को प्रिंट कराना है, ये देखिए। फिर जो लेफ्ट चाइल्ड का लेफ्ट चाइल्ड था उसके लेफ्ट और राइट को एंड सो ऑन ऐसे ऐसे चलना है, इसको हम कहते हैं लेवल ऑर्डर। टेक्निकली स्पीकिंग इसको हम कहते हैं लेवल ऑर्डर, लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल। बट ये होम 2 पे मैं हूँ, फिर बाद में मेरे को 4 और उसके चिल्ड्रन प्रिंट कराने हैं, यानी कि मेरे को 4 को एज अ रूट लेना है। तो बस कुछ नहीं करना है, कॉल लगाना है लेफ्ट को, फिर कॉल लगाना है साथ ही साथ राइट को, ठीक है, दैट्स इट। इधर देखिए कुछ भी नहीं करना। अब मैं लगाऊंगा डिस्प्ले लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट नहीं जो भी रूट है डॉट लेफ्ट, ठीक है, फिर वो लेफ्ट एज रूट बन के आ जाएगा। सिमिलरली कॉल लगा दो, कॉल लगा दो डिस्प्ले लेफ्ट डॉट राइट, रूट डॉट राइट। अब बेस केस क्या बनाने होंगे, जैसे ही मेरा नल हो जाता है तो रिटर्न, लिंक लिस्ट में जैसा होता था। तो इफ रूट इक्वल टू नल, समझो ना यार, अगर कभी भी नल रूट आ रहा है तो रिटर्न यहीं से दे दो यार, खत्म करो। अब एक बार इस कोड यू को आर चला के मोस्ट देखते हैं, वेलकम जब ये निकेश पूरा मेरा कुमार। काम हो जाएगा, मैं चाहता हूँ एक नेक्स्ट लाइन दे दूँ, तो लास्ट में हम एल लिख देते हैं, ठीक है, लास्ट में हम एल लिख देते हैं, ये प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट लाइन मिल जाएगी। रन करके दिखाता हूँ आपको कोड, और रन ऐसे होगा ना यार, पहले तो हम डिस्प्ले ऑफ रूट, ये देखिए, अब मैं रन करके दिखाता हूँ। कौन सा एरर आ रहा है, कोड नो कैन नॉट रीड वैल बिकॉज रूट डॉट लेफ्ट इज नल। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे यार ये देखो एक प्रॉब्लम आ रही है, जैसे 2 तो कॉमा आ गया हमारे यहाँ पे 4, और एक तो प्लीज की इंप्लीमेंटेशन क्यों आ गई। अच्छा मैंने रूट डॉट लेफ्ट डॉट राइट कर दिया, तो ये देखो यहाँ पे हमें वैल्यू लेनी है, कितनी गलती कर दी मैंने। इनफैक्ट अभी भी एरर आएगा, ये देखिए। तो देखो 2 के सॉरी, ये देखो पहले लेफ्ट की वैल्यू फिर राइट की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो 2 के लिए तो 4 6 आ गया, 4 10 सॉरी, फिर 4 के 6 5 आ गए। अब 6 का मेरा पहले आएगा, क्या कहते हैं, नल, और फिर 10, फिर आगे सारी चीजें मेरी यहाँ पे जाएगी। अब यहाँ पे हम एक काम सिंपल ये कर सकते हैं कि अगर मेरा जो लेफ्ट या फिर राइट में से कुछ नल है तो मैं एन एक प्रिंट तो करा ये दूंगा, सिली सिंपल सा प्रोसेस है। मिस्टेक ये तो पहले जैसे कर ही मेरे देते हैं पास तो एक मैं ही लेफ्ट की डाउटफुल वैल्यू हो है जाता हूँ कि और मैं एक नल गलत है, तो तो नहीं मैं सोच यहाँ रहा। देखो उसकी वैल्यू मेरी होगी कुछ प्रिंट करा दूंगा। एक हम ग्लोबल क्या है, देखना विदाउट एरर्स पहले निकाल के, एरर्स पहले निकाल के माइनस यहाँ पे। अब एक बार देखते हैं ये क्या होगा, ये चीज तो देखो कैंसिल आउट हो गई, 2 - 1 1 होता है। इसको बस सिर्फ मैंने क्यू के अंदर अपना क्वेश्चन, सबसे पहले तो देखते हैं क्या डायमेंशन का दे दिया 1 2 3 4 5, ये देखिए आंसर का मैक्सिमम करना, मैं एंड तक आज कर दो सीधा, रिटर्न भी नहीं अपनी, एक तो स्ट्रिंग के अंदर
यही मिल गया। क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए पी मेरा क्यूड को भी छोड़ो, आई वुड से कि अगर मैं कैसे सॉल्व करें, अगर ऐसे क्वेश्चन मुझे दे रखा है, मतलब लीड कोड पे मुझे बना के रूट और राइट, तो को हमने अटैच कर दिया, वन के लेफ्ट पे इंडेक्स। अब ये आप कुछ है ही नहीं, यानी कि यस इट इज टू रिटर्न कर दो, तो आप बोलोगे तो सिंपल क्वेश्चन। प्लस इसमें हम एक और चीज ऐड करेंगे, करना है मुझे इसको लिंक लिस्ट रिटर्न नहीं करना, इनफैक्ट मेरे को कोई नई लिंक लिस्ट भी नहीं बनानी है, क्वेश्चन का एसेंस ही है। वरना तो यार ये मीडियम की जगह एक इजी क्वेश्चन भी हो सकता था कि अगर मेरे को बस इसका प्री ऑर्डर ट्रावर्सल करो, एक लिंक लिस्ट में जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, कुछ बचा ही नहीं। मेरे को इसी ट्री को ऐसे चेंज करना है, आप देखोगे ये जानबूझ के राइट वर्ड ये ट्री ही है, एक स्क्यूड ट्री बनाना है, राइट लिस्ट है, देखो बिल्कुल लिंक लिस्ट है, अब ये कह सकते हो उसके जैसा है, बहुत बढ़िया। अब ऑफ कोर्स यार हम बार बार ऐसी हरकतें तो करेंगे नहीं यार, जो ये वाली है रूट डॉट वैल वाली, ठीक है, ये वाली हरकतें मेरे को बार बार तो नहीं करनी, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू डू। तो कंस्ट्रक्टर बना लो, यहाँ पे कि अगर मैं वैल्यू दे दूँ तो मेरा काम चल जाए, देखो इसको हटाओ। इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे खुद भी करता हूँ ना तो देखो अपने आप बन जाता है, यहाँ पे करके आई थिंक अगर मैं ऑप्शन रिटर्न दबाऊंगा, देखो क्रिएट कंस्ट्रक्टर बन गया, वाह। पब्लिक नोड ये देखो इंट आई, इनफैक्ट इंट वैल भी दे सकते हो आप यहाँ पे, इंट वैल, और आप जानते हो दिस कीवर्ड को कि भाई दिस डॉट वैल इज इक्वल टू वैल, बहुत बेहतरीन। तो वैसे भी काम चल सकता है, अब से ऐसे ही काम चलेगा, हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे यहाँ पे, राइट, रन करते हैं, तो आप देख सकते कि यहाँ पे आंसर आ गया मेरा 10, बहुत बेहतरीन। ये तो मैंने एक नोड बनाया है, अब अगर ऐसे ही मेरे को इसके चिल्ड्रन बनाने होंगे तो कैसे बनाऊंगा, ये देखिए, मान लीजिए मैंने एक रूट नोड बना दिया और मेरे को कुछ ऐसा डेटा स्ट्रक्चर बनाने, एक बार कि एक ये बनाया, फिर ये फिर मान लीजिए इसके दो चिल्ड्रन है और इसका सिर्फ एक ही चिल्ड्रन है, ठीक है, एक ही चाइल्ड है। आप ये समझ लीजिए इसके हमारे ऐसा नाम दे दूंगा कुछ, ये बनाऊँ विद दीज वैल्यूज, आप ये मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो वेरी सिंपल। अगर आपको मैनुअली बनाना है ट्री तो 1 2 3 4 5 6 नोड्स को बनाओ और फिर उनको कनेक्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। तो 6 नोड्स बना लेते हैं हम अलग अलग वैल्यूज के साथ, ए बी सी डी करके बाकी वाले, और अभी के लिए मैं रूट नोड बना लेता हूँ अपना, जिस पे वैल्यू दे रहा हूँ मैं अपनी 1, ठीक है। तो इसको एक बार के लिए हटाते हैं। अब ऐसी बहुत सारी नोड्स को बना लो, जैसे मैं कहता हूँ यार दो नोड्स को और बना लेता हूँ, नोड ए इक्वल टू इसमें वैल्यू दे दी 2, फिर मैंने बना लिया नोड बी, इसमें अगर वैल्यू दे दी मैंने यहाँ पे यार कितनी, इसमें वैल्यू दे दी मैंने 3, फिर मैं बना लेता हूँ यहाँ पे नोड सी। लेकिन उससे पहले काम करते हैं, जब मैंने ए और बी को बना लिया तो मैं चाहता था कि जब मैंने ए और बी को कंस्ट्रक्ट कर लिया, तो ये एरोज अभी तक लगे नहीं है, आप ये समझ लीजिए, अब ये एरोज मेरे लगे नहीं है, ठीक है, लगा देता हूँ वैसे तो एरो लगाने के लिए जब मैंने सिर्फ ये बनाया ये बनाया ये बनाया, तो ये हवा में नोड्स है कहीं ना कहीं। अब इसके लेफ्ट में मेरे को ये देना है, मतलब मैं चाहता हूँ रूट का चाइल्ड ए बने, तो मैं लिखूंगा रूट डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो यहाँ लिखिए रूट के लेफ्ट में क्या कहते हैं अटैच करा दो, जैसे नेक्स्ट बना देते थे ए, फिर 6 डॉट लेफ्ट कहाँ जा रहा था, नल है, ये भी देखो नल है, इसका राइट नल, बी डॉट राइट इज इक्वल टू ई, तो बन गया मेरा ट्री। इसका मतलब बेसिकली जो मैंने ये बनाया है, इसका मतलब ये जो मैं अभी आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ वो बन चुका है। अब यार आपको ख्याल आएगा कि यार मेरे को ट्री को डिस्प्ले कराना है, मेरे को बताना है कि ट्री ये बन चुका है और मैं चाहता हूँ हर एक पिता या फिर हर एक पेरेंट नोड प्रिंट हो, उसके साथ उसके चिल्ड्रन प्रिंट हो, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ मैं डिस्प्ले करूँ ट्री को कैसे, इधर देखिए, मैं मेरे 6 और 5 है और 10 का चिल्ड्रन मेरा यहाँ पे 11 है, आई वॉन्ट कि मेरा प्रिंट कुछ क्या मतलब है 1 2 3 4, साइज का मेरा फॉर्मूला क्या है, मैं कह सकता हूँ नंबर ऑफ, मतलब साइज ऑफ, अगर मैं बोलूँ साइज ऑफ, ये मेरा रूट नोड है, ठीक है, ये मेरा रूट नोड है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ साइज ऑफ दिस रूट नोड, मान लीजिए ये ए नोड है या ये लेफ्ट नोड है, ये राइट नोड है, ये ऑफ कोर्स मेरा रूट डॉट लेफ्ट रूट डॉट राइट। तो साइज ऑफ रूट नोड मतलब इस पूरे ट्री का साइज, रूट मेरे ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, शुड बी इक्वल टू साइज ऑफ रूट डॉट लेफ्ट प्लस साइज ऑफ रूट साइज और इसका। समझ रहे हो रिकर्जन कैसे लग रही है, कितनी सिंपल, एक सब ट्री का साइज प्लस इसका प्लस 1। एंड हमेशा मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जैसे मान लीजिए मेरा बेस केस आ गया, मैं 4 पे आया, तो अगर मेरे लेफ्ट वाला नल है और मेरा राइट वाला नल है, इनफैक्ट कोई भी सब ट्री अगर यहाँ पे मेरा नल आ जाता है तो यहाँ पे मैं 0 रिटर्न कर दूंगा, सिंपल, दैट इज इट, कोई बड़ी बात है ही नहीं यहाँ पे। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, एक 2 लाइन का कोड है लिटरली, ये देखिए, ठीक है, कुछ भी नहीं करना आपको, और एक बेस केस लिखना है कि कंप्लीट साइज ये प्लस ये प्लस ये, एंड ये अपने आप में एक ट्री है जिसकी रूट ये है, ठीक है। तो रिकर्जन अपना काम करके दे देगा अपने आप, फेथ रखो रिकर्जन के अंदर, ये देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है। मैं सिंपल क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, रिटर्न रूट डॉट लेफ्ट प्लस साइज ऑफ रूट डॉट राइट, बस खत्म यार। ये चीज मेरे को रिटर्न करनी है, एक बेस केस लगा लेते हैं यार, अगर गलती से मेरा रूट यार नल हो रहा है, अगर गलती से रूट मेरा नल हो रहा है, सिंपल सी बात है, अगर रूट नल हो रहा है तो रिटर्न कर दो 0, रिटर्न 1 नहीं करना, रिटर्न 0 करना है, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए मेरा लीफ नोड आ रहा है, एक ऐसा लीफ नोड जिसके कोई नोड्स नहीं है, तो उसके केस में मैं क्या करूंगा, चाहे वो नल है नहीं, मैं यहाँ पे आऊंगा 1 प्लस नल का, तो 0 प्लस 0 आ जाएगा। तो देखिए 2 लाइन का कोड है, एक बार आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ यहाँ पे, सिंपल प्री ऑर्डर हटाओ, सिस्टम डॉट आउट साइज ऑफ रूट, तो आप देखोगे आंसर आ जाएगा मेरा 1 2 3 4 5 6, इसका नाम साथ ही रख लेते हैं ताकि 7 आंसर आए। तो आप देखोगे साइज इज 7, यस दिस इज वर्किंग, दिस इज वर्किंग। अगर मैं कमेंट आउट कर दूं इसको एंड इस कनेक्शन को भी हटा दूं तो 6 आंसर आएगा। ये देखिए ऑफ कोर्स कुछ है ही नहीं, क्या मेरे को यहाँ पे ड्राई रन करने की जरूरत है, चलिए कर लेते हैं आपके सामने एक बार यार, अपना ट्री भी हमने बना रखा है, इक्वल साइज ऑफ कॉल प्लस ये वाला आंसर है 1 में, मेरे को और नल मेरे को यहाँ पे 0 और 0 दे रहे थे, तो मेरा जो टोटल आंसर था वो था 1 प्लस 0 प्लस 0। फिर मैंने अपना 1 आंसर दे दिया इसको, तो इसका आंसर हो गया 1 प्लस 1 यानी कि 2 का आंसर हो गया 3। 2 ने इसको रिटर्न किया, भाई मेरे आंसर तो 3 है, तू आगे पूछ। फिर इसने 3 से पूछा तुम्हारा आंसर क्या है, मेरे को ऐड करना है। 3 बोलता है मुझे नहीं पता, पूछ के बताता हूँ। तो 3 ने बोला लेफ्ट को कॉल लगाया नल, ये अपना आंसर दे देगा
इसने राइट को कॉल लगाया, ये कहता है रुको मैं भी पूछ के